खूबसूरत लगेगा, क्योंकि बड़े दिलचस्प मुकाबले देखने को मिलेंगे। टीम चैंपियनशिप खत्म हो चुकी है, अब इंडिविजुअल मुकाबले चल रहे हैं। जो पहला मुकाबला आप देखेंगे वो रहेगा इन दो खिलाड़ियों के दरमियान। सेंटर कोर्ट पर मौजूद हैं दोनों ही खिलाड़ी, एक तरफ तमिलनाडु की साई समिता, दूसरी तरफ महाराष्ट्र की ऋतुजा भोसले, सेकंड सीड। तो सेकंड सीड अपने सफर को आगे बढ़ाएंगी। ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला है, दरअसल प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला इन दोनों ने ही जीता, क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए दरकार रहेगी। तो सेंटर कोर्ट आज बहुत खूबसूरत मुकाबला दिखाएगा। हम एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। साथ ही अभिनंदन कर रहा हूं मैं कमेंट्री बॉक्स में हमारी साथी अंकिता भामरे का। अंकिता, आज दिलचस्प मुकाबले रहेंगे, पहले महिला सिंगल्स, उसके बाद मैन सिंगल्स क्वार्टर फाइनल, और फाइनली जो थर्ड मैच रहेगा आफ्टर लंच वो रहेगा मैंस डबल्स सेमीफाइनल। तो आकर्षक मुकाबलों में आपका कमेंट्री बॉक्स में बहुत बहुत स्वागत है। Good morning, everybody. What a warm welcome to the players here today with Dhols and Tilak. Exciting to see some wonderful action that's going to be taking place on center court today. If we talk about the women's singles draw so far, all the seeded players have moved on to the next round except for Ankita Raina, who had pulled out due to a groin pain. She will still be participating in doubles later on during the day. We have on screen Rituja Bhosle. She's represented India in the Billie Jean King Cup, a very historic win. She was a part of the historic team that actually qualified for the World Finals playoffs in 2020. And she's playing against Sai Simita from Tamil Nadu. It's a rematch, from day before yesterday. We saw both of them compete in the women's teams event against each other for the finals position. Rituja definitely prevailing in straight sets there. Wasn't a very tough fight, and it's going to be interesting to see how the match fares up today, because both the players know each other really well. They've just played each other. It's a hot sunny day, and Rituja obviously seeded second, the favorites here since the top seed has pulled out, but she does have a tough draw so far. On the other hand, we have Zeel Desai, who will be playing against Vanshika Chaudhary of Uttar Pradesh. Zeel, another player representing Gujarat, was also part of the women's Gujarat team that won the gold. That's Smita from Tamil Nadu on your screens. She's also been performing well in doubles in the international circuit. She's ranked around 15 in the country, around 1,000 in singles as far as WTA rankings are concerned, and she's 27 years old from Chennai and has been competing on the circuit since quite some time now. एक तरफ साई समिता है, देश की नंबर 15 खिलाड़ी, इनकी बेस्ट नेशनल रैंकिंग 8 रही है, 27 वर्षीय हैं। दूसरी तरफ उनका मुकाबला कर रही हैं सेकंड सीड ऋतुजा भोसले। महाराष्ट्र के इस खिलाड़ी ने सभी को प्रभावित किया है। खूबसूरत गुजरात शहर, अहमदाबाद को रिप्रेजेंट करने वाला यह शहर अपनी खूबसूरती को समेटे हुआ है। ऐतिहासिक तो है ही, औद्योगिक नगरी के तौर पर भी पहचाना जाता है। थोड़ा सा गर्म दिन तो रहा करता है, तापमान बढ़ा है और लगातार गर्मी बढ़ी है, लेकिन जब खेलों की गर्मी बढ़ा करती है तो ये गर्मी मैटर नहीं किया करती। गुजरात में पहली बार राष्ट्रीय खेल आयोजित हो रहे हैं और इन खेलों की जो चर्चा है अब देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हो रही है। हमारे पास बहुत अच्छी जानकारी है, आप सभी दर्शकों से हम शेयर करना चाहेंगे। कुछ दिन पहले ही राष्ट्रीय खेलों के तहत टेबल टेनिस चैंपियनशिप आयोजित हुई थी सूरत में, वहां का अनुभव मिला है। कल हमारी भारतीय टीम ने वर्ल्ड नंबर 2 जर्मनी को 3-1 से परास्त किया है वर्ल्ड चैंपियनशिप में। ये एक मोमेंटम जो यहाँ से मिला था खिलाड़ियों को, जो यहाँ से जो अनुभव मिला था, कंटिन्यूटी अपने आप में बड़ी चीज़ रहा करती है। यहाँ का अभ्यास आगे भारत के इन्हीं खिलाड़ियों ने, मानव ठक्कर, सत्यन ज्ञान शेखरन और हरमीत देसाई ने मिलकर वर्ल्ड नंबर 2 जर्मनी को परास्त किया है
ये अपने आप में बड़ी खबर है। तो राष्ट्रीय खेलों का लाभ हमारे खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलेगा, इसकी एक बानगी आपने जानी। ये जानकारी मेरे पास थी तो मैंने आपसे साझा की। यह है खूबसूरत सेंटर कोर्ट, जहां पर दोनों ही खिलाड़ी इस समय अभ्यासरत हैं। टॉस हो चुका है। ये साई समिता हैं जिनका जिक्र किया था, दूसरी तरफ है ऋतुजा भोसले, सेकंड सीड हैं। चूंकि अंकिता रैना अपना नाम वापस ले चुकी हैं सिंगल्स से, जाहिर सी बात है तो टॉप सीड का निर्विवाद रूप से इनका ही स्थान रहेगा और फेवरेट रहेंगी सिंगल्स के टाइटल को लेकर। आज अपना क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेल रही हैं। पहले मैच में आपने दिल्ली की कशिश भाटिया को परास्त किया था 6-0 और 7-6 से। 4 आईटीएफ सिंगल्स टाइटल इनके पास हैं, 19 आईटीएफ डबल्स के टाइटल इनके पास। तो मुकाबला दिलचस्प रहेगा। चूंकि जब आप क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलते हैं, नॉकआउट हर एक मैच महत्वपूर्ण रहा करता है, लेकिन क्वार्टर फाइनल और ज्यादा बेहतर होता है और ज्यादा रोचक होता है। Both the players have come through tough first round matches. Rituja Bhosle defeating Kashish Bhatia yesterday. The first set was rather easy at 6-love, but then she was down 3-love, 4-love in the second before she made a comeback and won 7-6. I was speaking to her earlier this morning, and she mentioned that the heat has been really testing the players throughout this event. Talking about Sai Samitha, also had a very, very tough encounter. She won the first set 7-5, lost the second one 4-6 against Soha Sadik from Karnataka, and then finally won the third set 7-6, 8-6 in the tiebreaker. So just managed to pull through there by 2 points in the end. Both the players played tiebreakers and have had tough first rounds that could just basically prepare them well for the upcoming matches. We expect this to be a close contest, a well-fought game, and let's wait and watch how this pans out. प्रैक्टिस जो रहा करती, जिसको हम मैच प्रैक्टिस कहते हैं, अगर उसमें आपके पास टफ कॉन्टेस्ट हो तो आगे के मैच के लिए तैयारी बेहतर हो जाया करती है। देखने वाली बात रहेगी। सोहा सादिक को 7-5, 4-6, 7-6 से एक टफ मुकाबले में हराने के बाद साई समिता किस तरीके का खेल खेलती हैं, जबकि 6-0 से पहला सेट आसान जीतने के बाद सेकंड सेट में टाई ब्रेकर से मुकाबले को जीतने वाली ऋतुजा भोसले अब इस मैच में किस तरीके का प्रदर्शन करती हैं। फेवरेट ऋतुजा भोसले रहेंगी, लेकिन साई समिता उनको चुनौती देने में काबिल हैं, काबिलियत रखते हैं, माद्दा रखते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। मैच प्रारंभ होने में कुछ ही समय बाकी। बहुत जल्दी से मैं बता दूं साई समिता के बारे में। 27 वर्षीय खिलाड़ी हैं, नेशनल रैंकिंग इनकी 15 है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी अपने आप को साबित करना है। महज 8 साल की आयु में आपने खेलना प्रारंभ किया। स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, मैच प्रारंभ होने जा रहा है। साई समिता के सर्विस से खेल प्रारंभ होगा। रिसीव करेंगे ऋतुजा भोसले। ऑलरेडी टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल मुकाबले में इन दोनों की मुलाकात हो चुकी है, जहां ऋतुजा भोसले ने परास्त किया था साई समिता को 6-3, 6-2 से। और ये हुई शुरुआत इस महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले की। साई समिता तमिलनाडु वर्सेस ऋतुजा भोसले महाराष्ट्र। Well, 3 easy points there for Sai Samitha on her serve. Rituja making a few unforced errors, trying to get her rhythm and groove into this match.
Chamati. First game. Easy hold there for Sai Smita. The first game of the opening set of this women's singles quarterfinals. The player who wins this match will definitely win at least a bronze medal in this tournament, as both the semi-finalists from the top half and the bottom half of the draw get medals. Rutuja Bhosle Chisev. Love 15. A forehand cross court return right in the corner by Sai Smita. Fifteen-all. $30-15. A good forehand cross court there by Rituja. Really far behind the line, but good depth there. Ball. $30-all. Out wide serve there, going straight in the net. 30 all. Ball. $40-30. Body serve there by Rituja, giving her a chance to hold serve. Smita getting jammed there on the forehand. Ball. Cheers. अरे आगे करो यार. Lag for service. दूसरा ही गेम संघर्ष की तरफ बढ़ा है. ड्यूस की पोजीशन है. सेकंड सर्व कर रहे हैं ऋतुजा. सेकंड सीड इस खिलाड़ी ने पिछले कुछ समय में सभी को प्रभावित किया है. लकी पॉइंट एडवांटेज हासिल किया है Chamati. साई समिता ने. Not a very strong start here by Rituja. You know, we see her struggling a bit with her first serves and a few returns.
It was an easy hold in the first game for Sai Smitha. Rituja committing a few unforced errors, and well, good first serve there. That's what we're Yes. used to seeing from Rituja, the out wide serve being one of her favorites, helping her get the first game back to deuce. अच्छी वापसी की अपनी पहली बेहतरीन सर्विस के जरिए। Advantage, Mosley. Another chance for Rituja here to hold serves to level the scores to 1-all. It does take players some time to get used to get into the groove of the match. Sometimes it takes time for the rhythm to come. Game Mosley. Ball આપી દો આ બાજુ આવે. Well, Rituja struggles but manages game to hold all. serve, making it 1-all in the opening set of the women's singles quarterfinals. Sai clearly likes to play from behind the baseline. She keeps the ball deep from both sides, using the slice to continuously change the pace to trouble the opponents. But the strokes don't have a lot of pace to trouble, players, especially who like to take the ball early.
and mixed doubles event. It's challenging with the weather conditions, with the heat on court. Yesterday, almost reaching up to 38 degrees. So the players are not only tackling their opponents, but also the hot weather conditions. But as they say, the top players are always ready for the challenge, extra challenge, whatever is thrown at them. Time. After the initial struggle in the first two games, Rituja has managed to, you know, get an edge past here. She started to attack on the first serves, very strong returns as well, managing to finish the balls in 2 or 3 rallies. We haven't seen any wrong rallies so far after the initial struggles here from Rituja. छठवें गेम की शुरुआत होने जा रही है। 4-1 से इस सेट में आगे हैं ऋतुजा। बहुत आसान वॉली आसानी के साथ स्मैश किया, ओवरहेड स्मैश। इतना इजी कम मिला करता है। रिप्ले में देखिए किस तरीके से बिल्कुल उसी पोजीशन पर थी जहां ये गेंद मिली। 15 लाओ। थोड़ा सा स्लो स्टार्ट किया, लेकिन जैसे जैसे अभ्यस्त होती गई उसके बाद अपनी काबिलियत को प्रदर्शित किया ऋतुजा ने। थोड़ा सा जिसे कहा जाए टच में नजर नहीं आ रहे हैं साई समेता, जिस चीज के लिए वे जानी जाती हैं। होनहार खिलाड़ी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2 ITF डबल्स के टाइटल्स उनके नाम हैं, लेकिन बावजूद इसके आज फर्स्ट सर्विस के लिए जहां स्ट्रगल किया, कोर्ट पर भी आज फोरेन क्रॉस कोर्ट थोड़ा सा बाहर गया। 30-15 इस गेम का पहला पॉइंट अर्जित किया है साई समेता ने। 30-15। A good out wide serve, following it up with a wide angle there, wrong footing her opponent. A well executed point there by Rituja, very comfortable in finishing it off. Very well played. Saw the opponent was on the run, and a quick thinking drop shot there helped her finish off the point. Very well played by Rituja Bhosle, giving her a 5-1 lead in the first set. Sai doesn't seem to be in a lot of form here today, you know, slow, sluggish on the feet. The balls don't have enough pace to hurt the opponent. If you look at the length on this on her returns, they are definitely landing short near the mid-court area. Not enough placement or pace there to trouble her opponent till now. बाहर गया। अच्छा खेल देखने को मिला दोनों ही तरफ से, हालांकि ताकत नहीं थी, लेकिन ठीक ठाक रिटर्न जा रहे थे।
It's not every day that we get to watch slices from both sides, forehand and backhand, and Sai seemed to be doing that quite effectively in the previous point, though the last one did manage to go out. This time Fifth ऋतुजा का hello. बैकहैंड क्रॉस कोर्ट बाहर गया। साई समिता अपना पहला गेम जो पहली सर्विस उन्होंने की थी वो होल्ड किया था, उसके बाद लगातार 2 ब्रेक हुए। ये मस्ट विन गेम है इस सेट के दृष्टिकोण से देखा Ready जाए for तो। service. T50. Unforced error there by Rituja Bhosle, giving Sai a chance to get back into this service game. Sai serving to stay in the set. ये गेम जीतना होगा इस सेट में अपने आप को बनाए रखने के लिए साई समिता को। क्या जबरदस्त सर्विस रिटर्न। बड़े खिलाड़ी की निशानी हुआ करती है, कई बार आपको सरप्राइज किया करते हैं अपने खेल के जरिए। वही मौका था, कितनी खूबसूरती के साथ डबल हैंडेड बैकहैंड क्रॉस कोर्ट निरुत्तर किया विपक्षी साई समिता को। आज उस कलर में दिखाई नहीं दे रहे हैं साई समिता जिसके लिए जाने जाती हैं। बाहर खेलें, रश मेरा रहेगा अंकिता आपसे। आज वो कलर दिखाई नहीं दे रहा है, वो टच दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा इजी लग रहा है। लगता है आपको साई अपना 100% दे रही है? Oh, she does definitely seem to be struggling quite a bit here today. We did expect her to put up a very good fight here against Rituja. We saw her do that despite an easy score line. She did put up a good fight 2 days ago on this very court, but it's first set there for Rituja Bhosle, 6-1 after the initial struggle in the first 2 games. It has been a much smoother ride for Rituja. Sai clearly struggling with her form, maybe physically as well. We haven't seen a lot of running on court. She did try to change the pace a bit with her slice, and a good slice can be tricky for the opponents sometimes, but her strokes haven't put Rituja in a lot of trouble so far. An easy and smooth ride there. Looking at the highlights, Rituja clearly the one in the attacking mode, making sure she meets the right angles and places the balls to finish off the points quickly. आज थोड़ा सा इजी खेले, पूरा सेट आप देख सकते हैं हाइलाइट्स के जरिए। कुछ अच्छे मौके, कुछ अच्छे शॉट्स पहले और दूसरे गेम में बेहतर दिखाई दी, लेकिन थर्ड गेम में जैसे ही ब्रेक उनके खिलाफ और ऋतुजा को हासिल हुआ, उसके बाद लगभग सरेंडर किया है। बहुत ज़्यादा कोशिशें नहीं देखने को मिली। फर्स्ट सर्व के लिए संघर्ष किया, सेकंड सर्व जो वीक रहा करती थी उस पर आसान चांस दिए विपक्षी खिलाड़ी को। Sai definitely will she'll have to raise the level of her game, Prashant, if she wants to make a match of it. Else it's going to be an easy ride for Rituja. She'll have to push her out of her comfort zone, probably try keeping her slightly back with either adding more spin or more pace on her strokes, because at this moment Rituja is very comfortable in a very comfortable position to play her strokes. दूसरे सेट का पहला गेम, पहली सर्विस ऋतुजा भोसले। तो शुरुआती सर्विस और स्टार्ट अच्छा नहीं मिला, डबल फॉल्ट के साथ
स्टार्ट किया है ऋतुजा ने। कई बार होता है ऐसा, एक आसान जीत हासिल हुई पहले सेट में, दूसरे सेट की शुरुआत डबल फॉल्ट के साथ। ये पहला डबल फॉल्ट है इस मुकाबले का ऋतुजा के जरिए। क्या जबरदस्त डाउन द लाइन, एक और बेहतरीन विनर देखने को मिला। हालांकि स्पीड, She did try for that inside out, but it went out and it's love 30. एक बार की लगा कि इन है, और जिस तरह से आश्वस्त थे ऋतुजा, लेकिन लव 30। Love 40. Prashant, I'd like to talk to you about something very interesting here. Looking at such situation in the first game, when you're playing a tough match, it's going at 3-all, 4-all. You tend to keep your guard up. You tend to keep your focus levels to the best of your ability. And when you've had an easy ride so far, you do tend to lose, the focus, get a little bit casual sometimes. गेम 6 बार थी। ब्रेक हासिल किया है वो भी लव गेम के जरिए। आपने बिल्कुल सही बात कही, एक बड़ा खिलाड़ी बड़ा ऑब्जर्वेशन रखता है, और आपकी टेनिस से ही जुड़े हुए हैं, खेलों की दुनिया से ही नहीं, बल्कि टेनिस ही आप खेला करती रही हैं। आखिरी पॉइंट किस तरीके से ब्रेक हासिल किया, ये अपने आप में आश्चर्यचकित करने वाला है। बैकहैंड क्रॉस कोर्ट बाहर गया। लव गेम, ब्रेक हासिल किया साई समिता ने, इस मैच का पहला ब्रेक। अंकिता ने बताया कि जब आप कोई टफ सेट या टफ गेम जीतकर अगले गेम में, अगले सेट में पहुंचते हैं, तो आपका फोकस कहीं ज़्यादा बेहतर रहता है, लेकिन आसान विक्ट्री के साथ जब आप पहुंचते हैं, कहीं तो भी थोड़ा सा कैजुअल हो जाया करते हैं। ये अक्सर देखने को मिलता है, इसीलिए कहा जाता है टफ मैच प्रैक्टिस बड़ा रिजल्ट दिया करती है। एक आसान टीम के खिलाफ, एक आसान अपोनेंट के खिलाफ एक आसान जीत आपको मुश्किलें दिया करती है नेक्स्ट टफ मैच में। Rituja, I think, trying for too much there. Hit a nice drive volley inside out, but couldn't finish it off once again. Really trying to go for too much there, hitting the bottom of the net. Thank you, ball boy. ब्रेक मिला है, होल्ड करें तो बढ़त हासिल होगी। मिली अपॉर्चुनिटी को गंवाए नहीं साई समिता। बढ़िया सर्विस। Sometimes you let your guard down for just a few minutes and you've already lost a few games by then. 36वीं राष्ट्रीय खेलों की टेनिस प्रतियोगिता आप देख पा रहे हैं अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट स्थित खूबसूरत टेनिस सेंटर से। सेंटर कोर्ट पर मुकाबले चल रहे हैं। आज दिलचस्प मुकाबले हैं, व्यक्तिगत मुकाबले। महिला एकल का क्वार्टर फाइनल मैच आपके सामने है। आमने सामने हैं दो बड़ी खिलाड़ी, एक तरफ सेकंड सीट महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करने वाली ऋतुजा भोसले, दूसरी तरफ तमिलनाडु की तेज तर्राट साई समिता। पहला सेट ऋतुजा ने अपने नाम किया 6-1 से, लेकिन दूसरे सेट के पहले ही गेम में ब्रेक हासिल किया है साई समिता ने। ये बताता है कि इस मैच में आकर्षण कितना है, रोचकता कितनी है और संघर्ष कितना देखने को मिलेगा। दूसरे सेट का दूसरा गेम चल रहा है, होल्ड के लिए पहुंच गई हैं। 40-0 पर हैं इस समय साई समिता। ये अपने आप में अद्भुत है। 1-6 से पहला सेट लूज किया है, दूसरे सेट में पहला ही गेम जहां ब्रेक हासिल किया, और दूसरे गेम में आपने एक आसान होल्ड अर्जित किया। तो 2-0 की बढ़त है साई समिता के पास। उम्मीद की जा रही थी टक्कर अच्छी देखने को मिलेगी, उस उम्मीद को दरअसल परवान चढ़ाया है
साई समिता ने अपने शानदार खेल के जरिए कम से कम दूसरे सेट में तो हम कह सकते हैं। Don't think Sai has been, has been pushed a lot in the second set so far. I think it's been Rituja who's been making a lot of unforced errors in the last two games. Sai not having to do much here because of the easy points that she's won. I think it's time now for Rituja to really pull up her socks and get back, into the match. Focusing hard with each and every point. दो अच्छी जीत अपोनेंट के खिलाफ कितना बड़ा दबाव पैदा किया करते हैं, ये दिखाई दे रहा है। इस बार अच्छा शॉट, अच्छा प्लेसमेंट, डाउन द मिडिल, थोड़ा तेज तरह डीप रिटर्न, पीछे नहीं पहुंच पाई साई समिता। पहला ब्रेक हासिल हुआ था साई समिता को पहली सर्विस पर, ये दूसरी सर्विस है तीसरे गेम में। एक और अच्छा स्ट्रोक डाउन द लाइन, फोरहैंड रॉन्ग फुट पर लिया, एक बेहतरीन विनर देखने को मिला। अब अपने धीरे धीरे सही रंग में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि दूसरा सेट शुरुआत में थोड़ा सा फीका रहा था ऋतुजा के लिए। दो शून्य की बढ़त है साई समिता के पास, ये अपने आप में एक अच्छी बात है। सेकंड सीट खिलाड़ी के खिलाफ आपने बेहतर खेल का प्रदर्शन किया। एक और बाहर शॉट, बैक एंड क्रॉस कोर्ट। 40-15। हालांकि दो गेम पॉइंट हैं, लेकिन तारीफ करनी होगी। 1-6 से पहला सेट लूज करने के बाद दूसरे सेट में एक ब्रेक एक होल्ड के साथ 2-0 की बढ़त है साई समिता के पास। 40-15। Well, a very comfortable and strong hold there by Rituja, getting the lead, narrowing down on the lead, getting the scoreline back to 2-1. Sai's returns haven't been so effective here today. We haven't seen her able to push her opponent further back, or some strong placement that jams her opponent on the, to hit the first ball. Rituja very finely putting her weight behind the ball. She's finding those corners and she's going for them very, very successfully. A small hiccup there in the beginning, I think. Slow start in both the sets, probably let her guard down, as we mentioned before, and that can put you in a trouble situation sometimes. You end up losing a few points early on and put a lot of pressure on yourself if in case the opponent finds their rhythm and gets back strongly at you in the match. It has been an easy ride so far for Rituja, especially in the first set. We've seen her hold serves quite comfortably. It'll be interesting to see now whether she's able to she's able to get back strongly with some strong first serves, and if she is able to trouble Rituja with her style of play. चौथा गेम दूसरे सेट का महत्वपूर्ण रहेगा। क्रॉस कोर्ट की कोशिश, थोड़ा सा डीप रिटर्न था तो वहां मुश्किलें नहीं थी, पोजीशन उतनी अच्छी नहीं कर पाई, फाइनली नेट पर खेली। तो पहला अंक चौथे गेम का हिस्से में आया अपनी ही सर्विस पर साई समिता के। 15 लव। Very good inside out forehand there by Rituja. She stayed very low, was in perfect condition, good balance there on the stroke, definitely rewarding her. Can you see that depth
on that forehand. That was the one that did the trick for her in the end. Staying low in line to hit the ball is a very important aspect in tennis. Wait in 30. A smart change of pace there by Sai, not throwing in too much pace. Ritujat totally caught unaware in that situation and throws the ball out. Quite a few unforced errors here. Not generally the case with Rituja. Another forehand long there. No placement on that stroke. There wasn't even a great setup there. Playing it on the back foot, hitting it very long there. Rituja seems to be putting herself in a bit of a trouble there. You know, a few easy points in this game, and Sai holds serve quite comfortably. तो एक अच्छा होल्ड देखने को मिला साई की तरफ से. आवश्यकता थी साई को, अगर इस सेट में अपने आप को मजबूत बनाए रखना है तो कम से कम अपनी सर्विस होल्ड करनी होगी. एक ब्रेक ऑलरेडी वे ले चुकी हैं. यहाँ ऋतुजा के लिए थोड़ा सा संघर्ष ज़रूर मिलेगा क्योंकि 3-1 की बढ़त कॉन्फिडेंस दे रही होगी साई समिता को. और 2 इजी पॉइंट पिछले गेम में दिए थे. यहाँ शुरुआत अच्छी हुई है, जगह बनाते हुए इनसाइड आउट खेलने की कोशिश, वो हाइट नहीं मिल पाई. देखेंगे रिप्ले में किस तरीके से पॉइंट गंवाया था. जगह ज़रूर बनाई, पोजीशन ज़रूर ली, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाई अपने स्ट्रोक को. इनसाइड आउट, नेट में उलझा. लव 15. पहली सर्विस मन मुताबिक नहीं है. ठिकाने पर अगर पहली सर्विस ना पड़े, दबाव अतिरिक्त पैदा हुआ करता है खिलाड़ी के ऊपर. इससे बेहतर खेल नहीं हो सकता. अपने से कहीं ज्यादा सीनियर और बेहतर रैंकिंग के खिलाड़ी को इस तरीके से परेशानियां देना, कोर्ट के दोनों कोनों पर दौड़ने के लिए लगातार मजबूर किया, फाइनली फिनिश किया. इस गेम में कहीं भी नहीं थी ऋतुजा. साई समिता डिक्टेट कर रही थी, अपनी शर्तों पर खेल रही थी. One of her favorite angles, Rituja hitting it very successfully here this time. I think in the last few games we've seen her rushing a bit into her strokes. She's not, she needs to take a step back, stay calm, and then play out her strokes. Take the time that she likes to before executing the strokes. Well executed forehand cross-court there by Rituja. Just the kind of stroke play she's known for. We do expect her to go for these shots time and again. She's done them before quite comfortably in the past few matches. Not a very tough situation to be in. She's serving.
Just stay confident, play your strokes, get back into the match, and then dictate on your terms. Just the requirement at this point of time. स्ट्रगल के लिए मजबूर हैं और ये होना नहीं चाहिए. डबल फॉल्ट देखने को मिला ऋतुजा की तरफ से और एक ब्रेक का अवसर है, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी. दूसरा ब्रेक एक सेट में सेकंड सीड खिलाड़ी के खिलाफ एक अनसीडेड खिलाड़ी के पास होना बड़ी अपॉर्चुनिटी. बहुत बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया, इसमें कोई दो राय नहीं. नाखुश हैं ऋतुजा, होना भी चाहिए. 6-1 से पहला सेट जीतने के बाद दूसरे सेट में दूसरा ब्रेक उनके खिलाफ हासिल किया साई समिता ने. एक अच्छी रैली, हालांकि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स दोनों ने ही नहीं किए, थोड़ा सा डिफेंसिव मोड रहा, लेकिन फाइनल जो अंक रहा एक फोरहैंड स्ट्रोक जो बाहर गया. तो 4-1 से बढ़त हासिल की है साई समिता ने 1-6 से पहला सेट लूज करने के बाद. ये अप्रत्याशित भी है, सरप्राइज भी कराता है और वास्तव में एक बढ़त भी दिलाता है मानसिक तौर पर ऋतुजा के खिलाफ. I think the first two games in the second set were exactly what Sai needed, you know, to get back her confidence. We now see her stroking the ball much better, more confidently. She's moving Rituja from side to side, corner to corner. Better placement here in this game, putting a lot more balls in play, especially in the corners of the court. Some of the highlights there from the previous game. Sai playing very confidently at the net. Time. A little bit of a, you know, a casual approach there by Rituja in the early games of the second set, and she's really dug herself into this tight situation. Sai Smita serving at 4-1 in the second set. Suddenly see a lot of errors there from Rituja. You know, she's really cut down on her pace, not playing that attacking game style that we saw her play in the first set. She seems to be losing her confidence here a bit. ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन दिखाई ऐसा ही दे रहा है. पहला गेम 6-1 से आपने जीता है पहला सेट. अनफोर्स्ड एरर. ऋतुजा थोड़ा सा ऑफ कलर हुई हैं, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते. फर्स्ट सेट अच्छे मार्जिन के साथ जीतने के बाद दो ब्रेक उनके खिलाफ हासिल हुए साई समिता को. डाउन द लाइन खेलने की कोशिश, फोरहैंड के सहारे नेट में उलझी. सटिलाओ, ये पहला अंक है इस गेम का ऋतुजा के पास. साई समिता, मैं माफी चाहूंगा, लव गेम की तरफ आपका कॉन्फिडेंस किस स्तर पर पहुंचा है पहला सेट लूज करने के बाद, ये देखने लायक. Getting slightly off balance on that high deep ball on her forehand, not being able to get herself in a better position to hit that ball. She's still up quite comfortably on her serve at 40-15.
Another unforced error there by Rituja, and the girl from Tamil Nadu races up to a 5-1 lead in the second set. It's been a very surprising second set here so far. Very, very quick. The tables have turned. She's up by 1, almost waiting to return it out. One break here, and it'll be 1 set all for the players here on the center court. अच्छी फर्स्ट सर्विस, 15 love. देरी से एक अच्छी कोशिश देखने को मिली इस सेट में। 1-5 डाउन चल रही है। आसमान पर थोड़े से बादल हैं जो ठंडक पैदा किया करते हैं, लेकिन मुश्किलों भरे बादल इस समय ऋतुजा के हिस्से में है। 6-1 फर्स्ट सेट, 1-5 सेकंड सेट। इतना अंतर आसानी से देखने को नहीं मिला करता है। 15 all. 15 ऑल। पिछला पॉइंट किस तरीके से लिया है देखिएगा। एक अच्छा फोरहैंड क्रॉस कोर्ट जो मुश्किलें पैदा कर गया, लेकिन जो खेल खेला था पहले सेट में वो नदारद है इस समय देखने को नहीं मिल रहा है ऋतुजा की तरफ से। फर्स्ट सेट में ऑफ कलर थी साई समिता, और ये स्थिति देखने को मिली सेकंड सेट में ऋतुजा की तरफ। हालांकि इस गेम में 30-15 की बढ़त है, ये अंक अच्छा हासिल किया। बेहतरीन क्रॉस कोर्ट देखने को मिला, उतनी हाइट नहीं थी, रिटर्न मुश्किलों में था, नेट में उलझा। 30-15। The players seem to have, switched situations here. We saw Sai Smitha really off color, struggling with her movement, with her strokes in the first set. And Rituja seems to be following suit here in the second. Suddenly, a big drop here in first serve percentage. A lot of unforced errors from both sides. Not playing with the confidence she enjoyed in the first set. Yeah, break point there for Sai Smitha. सेट पॉइंट था, 2 सेट पॉइंट अभी भी, 1 सेट पॉइंट अभी भी बाकी है ना। ड्यूस की स्थिति, मैं माफी चाहूंगा। 40-40 की बराबरी, ये होल्ड चाहिए रहेगा ऋतुजा को, अन्यथा ये सेट गवा बैठेंगे और तीसरे सेट में मुकाबला जाएगा जो इस गर्मी में आसान नहीं होगा। अनफॉर्स्ड एरर, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, अच्छी पोजीशन में थी लेकिन बाहर खेल बैठी। एक समय गेम पॉइंट उनके पास था, सेट पॉइंट उनके पास था, लेकिन सब कुछ गवा दिया। अब ऋतुजा, गेम पॉइंट उनके पास, सेट में वापसी की उम्मीद, वापसी का अवसर। Good drop shot there by Rituja. A lot of struggle, but manages to hold serve to stay in the second set. 2-5 down after having won the first set, 6-1. She hasn't really lost the second set so far. She still has an opportunity. She's done so before, even yesterday when she was down 4-love in the second against Kashish Bhatia, and a well-fought second set there did get her a victory in the end, even though it was by a very small margin. She knows she can do it again. She has the game. She just has to keep her confidence high, get more balls in play, stick to her attacking game style if she wants to get back into this set. हाइलाइट्स आप देख रहे हैं, इस
तरीके से पिछला गेम हुआ, एक बेहतरीन ड्रॉप जो था Game वो Bosley. फाइनली इस गेम को फिनिश करने में कामयाब रहा। वो ड्रॉप आपने देखा। Rituja has to keep her uncertainties aside, focus on those strong first serves, good returns. She has an attacking style of play and she has to keep going if she wants to finish it Time. off in style. 6-1 पहला गेम, पहला सेट गया है ऋतुजा के पक्ष में। तो दूसरे सेट में साई समिता के पास बढ़त है। आपने सर्विस होल्ड करती हैं तो इस सेट को जीत लेंगी। मैच में पुख्ता तरीके से, मजबूत तरीके से वापसी करने में कामयाब होंगी। ये हैं ऋतुजा भोसले, सेकंड सीड खिलाड़ी हैं, लेकिन अनसीडेड साई समिता उनकी बड़ी टक्कर दे रहे हैं। 5-2 8वां गेम इस दूसरे सेट का। और क्या जबरदस्त रिटर्न, सर्विस रिटर्न इस खिलाड़ी की काबिलियत भी है, ताकत भी है। सेकंड सीड, कोई खिलाड़ी यूं ही नहीं होता किसी प्रतियोगिता में। लॉ 15 और सर्विस फॉल्ट थोड़ा सा दबाव पैदा किया करता है। बढ़िया स्ट्रोक, फोरहैंड डाउन द मिडल, जिसको कंट्रोल नहीं कर पाई, वापसी बाहर कर बैठी। सेट पॉइंट से वापस लौटी हैं। सेट पॉइंट सेव किया था उन्होंने पिछले गेम में, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा, रिदम मोमेंटम मिला होगा, उसका रिजल्ट भी दिख रहा है। लव 30 ब्रेक चाहिए किसी भी हाल में, क्योंकि मस्ट विन गेम है इस सेट के दृष्टिकोण से ऋतुजा के लिए। Another strong forehand down the line, just the kind of game style we expect her to execute. Sai not adding enough spin or depth on her strokes. We've seen her struggle with those balls in the center quite a few times in the first set, and she seems to be doing that again now, especially in tough situations. बहुत बढ़िया, नेट पर आकर फोरहैंड क्रॉस कोर्ट विनर खेला, तो फाइनली इस गेम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। लव 40 डाउन चल रही थी, अब 40-15। 2 गेम पॉइंट अभी भी पास में है, 2 ब्रेक पॉइंट अभी भी पास में है, और इसी की आवश्यकता है ऋतुजा को। पहला सेट जीता 6-1 से, दूसरे में संघर्ष कर रही हैं। Good serve there down the middle from Sai Smita. It's still 30-40. She's down a break. एक चांस और है ब्रेक का, ब्रेक पॉइंट अभी भी एक बाकी है। इसी की आवश्यकता थी। खूबसूरत एंगल चेंज करने वाला शॉट डाउन द लाइन, क्रॉस कोर्ट को तब्दील किया और फाइनली ड्यूस हासिल किया। 3 strong forehands there by Rituja, getting her that much needed point and a break of serve. Sometimes you just have to stay confident, trying to get your rhythm back, play the shots that you know what to do, play to your strengths, and it does give you your edge back at times. Patience is the key here. तो 2 लगातार गेम में जीत। बैकएंड क्रॉस कोर्ट बाहर गया, ब्रेक की आवश्यकता थी, ब्रेक हासिल किया ऋतुजा ने, और अब थोड़ा सा रिदम बेहतर दिखाई दे रहा है, कंट्रोल कहीं ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। सेकंड सीटेड हैं महिला एकल में ऋतुजा भोसले, महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करते हैं, देश में नंबर 4 हैं वर्तमान में
अगर वर्ल्ड रैंकिंग की बात की जाए तो 415 415वां नंबर उनका है। आज प्रतिष्ठा की भी लड़ाई है, सम्मान का भी प्रश्न है। अनसीडेड खिलाड़ी के खिलाफ संघर्ष। Good first serve, and it's an ace there for Rituja, giving her a 30 love lead. Well, those first serves certainly seem to be doing the trick here, getting her those much needed easy points. It's certainly going to help her confidence here. मैच में वापसी कैसे की जा सकती है एक बड़ा खिलाड़ी जानता है, इसी कारण वो बड़ा बनता है। 1-6 डाउन चल रही थी, अब 3-4 पर एक आसान होल्ड की तरफ बढ़ती हुई 40 लव। Well, two strong games there by Rituja, and it's back to 5-4 in the second set. She's still down 4-5 Rituja, but she's definitely seems to have gotten her rhythm back. More and more attacking stroke play. She's using her forehand, her strength as to her perfect advantage, playing the correct angles. Just the requirement of the match. A very, very important game here for both players. Sai having another opportunity here to serve out the set. She was up 5-1. Lost 3 games in a row. एक सर्विस होल्ड देखने को मिला, उसके बाद ब्रेक और अब एक बार फिर सर्विस होल्ड, तो कुल मिलाकर 3 लगातार गेम जीते हैं। 1-5 डाउन चल रही थी, उसके बाद वापसी। अब 4-5 का स्कोर है। It certainly made the match more interesting here, Prashant. We thought it would be one-sided after we saw the first set with a score line of 6-1. The tables were completely turned in the second. Sai enjoying a very comfortable 5-1 lead. Rituja losing her sense of rhythm, her game in between. Really struggling with her strokes and serve. But she seems to be getting and putting all of that back together now, winning 3 games in a row. तमाम उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं इस मुकाबले में। 6-1 से अगर पहला गेम जीता ऋतुजा ने, तो दूसरे गेम में 5-1 की बढ़त थी। लगातार 3 गेम जीतने के बाद 4-5 से इस सेट में बनी हुई हैं, लेकिन मस्ट विन गेम है ये। सेट गवा बैठेंगी और साई समिता जानते हैं इस गेम की आवश्यकता या महत्व। एक और क्रॉस कोर्ट बाहर गया, एक होल्ड मैच में मजबूती के साथ वापसी करा देगा। थर्टी लव। इस सेट में बहुत जबरदस्त खेल का प्रदर्शन किया है साई समिता ने। ये इजी रहा, एंगल अच्छा मिला था, लेकिन इतना अच्छा नहीं था कि आप रिटर्न नहीं कर सकते। अनफोर्स्ड एरर देखने को मिला। It's important for both the players to keep the ball in play a little longer than usual, you know, because both of them are under pressure. It's an important game for both of them in terms of this set, and a few extra balls in play will definitely put a lot more pressure on the opponent. Just the kind of tennis I was hoping for. You know, it's the important situations is where your mental fitness is tested, and Rituja hitting that big forehand inside in. You're gonna get that opportunity. You just have to wait for your chance. Patiently play the balls at the great, you know, with the right placement.
बैक एंड डाउन द लाइन, थोड़ा रिस्की स्ट्रोक था और 30 मुश्किलें 40. दे गया। ब्रेक का अवसर हासिल हुआ है ऋतुजा को, उनकी काबिलियत को झलकाता हुआ इस गेम में उनका खेल। लव 30 डाउन चल रही थी, अब 30-40 एक ब्रेक पॉइंट उनके पास है। ब्रेक की आवश्यकता थी सेट में अपने आप को बनाए रखने के लिए। 30-40 जिसकी आवश्यकता थी उसकी पूर्ति की, Game Bosley. ब्रेक 5 हासिल games किया। out. 1-5 डाउन इस खिलाड़ी ने, बॉल 5 इस ऑल तरफ। किया है, 5 गेम ऑल। सेट में बॉल इस वापसी तरफ। की है, मैच में वापसी की है, मजबूत स्थिति हासिल की है। अब मैच गंवाने का दबाव रहेगा साई समिता के ऊपर। आपने विपक्षी को, बड़ी खिलाड़ी को अवसर दे दिया है वापस लौटने का। 5 गेम ऑल। Well, it's Rituja who seems to be back in the match, leveling scores at 5 all. Uh, 4 consecutive games won here by her so far. Love 15. A good lob there by Sai Smita, the first one we've seen from her so far in this match today. Interesting single hand backhand. She uses it well, you know, to change pace against her opponents. Out. Down the line going long. 50 low. बहुत अच्छी स्थिति से बराबरी पर विपक्षी के लिए अवसर पैदा कर दिए साई समिता ने। 5-1 से आगे थी, केवल एक गेम की आवश्यकता थी, लेकिन 2 ब्रेक विपक्षी को दे बैठी। 15 ऑल। बेहतरीन फर्स्ट सर्व। 30-15। Rituja definitely following a serve pattern here. You know, she's been serving out wide on the forehand. An unforced return error there by Sai Smita gives Rituja 40-15 lead in this 11th game of the second set. Rituja has raced back into the match with 4 consecutive games. Game Bosley. 1-5 डाउन चल रही थी, Bosley अब leads 6-5। 6 games to 5. ये आसानी से देखने को नहीं मिला करता। आप इतनी ज़बरदस्त वापसी एक साइड में कर ले। आपने तो लंबा समय टेनिस में बिताया है, इतना अंतर ख़त्म करते हुए कम ही देखने को मिलता है। I've always mentioned Prashant that all is not lost. Even when she was 5-1 down, I said, you know, the need of the hour is to get those balls back in court, play few more balls in play, get your rhythm going, and as soon as you start winning those important points, a few games in your kitty, and you get your confidence levels back up. It does happen with players a lot many times. You know, they struggle a bit initially, find their rhythm and it's just a matter of getting those important points and you're back on track. It seems to be like a repeat performance of yesterday where she comfortably won the first set, was way down in the second, and then pulled it through in the tie break. स्कोर लाइन आपको आसान दिख रहे होंगे, लेकिन ये आसान कम से कम साई के लिए बिल्कुल नहीं है। 1-6 पहला सेट लूज किया, दूसरे सेट में 5-1 लीड कर रही थी। She clearly had her नंबर्स पर ध्यान chances दीजिएगा, there. 5-1 से आगे थी, अब 6-5 से पीछे हैं। सेकंड सीड ऋतुजा ने अपने आप को साबित किया है क्यों वे बड़ी खिलाड़ी हैं। ऐसे ही उनके हिस्से में बड़ी जीतें नहीं आई हैं। इसी प्रतियोगिता में, राष्ट्रीय खेलों के इसी एडिशन में
पहला अंक जुटाया। मैं बात कर रहा था राष्ट्रीय खेलों के इसी संस्करण में टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में बहुत आसान जीत दर्ज की थी ऋतुजा ने 6-3 6-2 से साई के खिलाफ। लेकिन यहाँ साई ने ज़बरदस्त संघर्ष किया पहला सेट लूज करने के बाद। पिछला अंक कैसे गंवाया है ऋतुजा ने वो आपने देखा। एक और फॉरहैंड बाहर गया। Not enough spin on that stroke, throwing the ball really long there. Sometimes there's just enough pace on the ball, and all you need is to add a little more spin and trajectory to get the ball back in play. You know, it's the small things that matter the most here in tennis. Quick early preparation, quick feet, just getting behind the ball at the perfect time to be able to execute a big stroke. Just how we saw in the previous point. एक वीक रिटर्न, उसका जबरदस्त प्रतिकार किया, एक बेहतरीन स्ट्रोक देखने को मिला। 40-50. लेकिन मुश्किलें कम नहीं हैं। एक मुश्किलों भरा स्ट्रोक, अनफोर्स्ड एरर जिसे कहा जाएगा। 40-15 मस्ट विन गेम रहेगा अब हर एक साई समिता के लिए। और एरर देखने को मिला। 40-30. मुश्किलें उतनी ज़्यादा नहीं थी लेकिन कॉन्फिडेंस कहीं तो भी कम हुआ है। बैक हैंड स्लाइस पहुंचा नेट में। अगर ये ड्यूस की स्थिति आती है तो साई समिता बहुत मुश्किलों में रहेंगी क्योंकि 5-6 डाउन चल रही हैं। मैच गंवाने का दबाव पैदा होगा। Game Shamarthi, 6 games all. Well, it's 6 games all in the second set, just when we thought Rituja was in the lead and she was going to finish it off with a break of serve. Tie break. Not the case here so far. Sai Smita manages to hold serve. A few easy points there by Rituja. Some struggles there, and it's 6 all in the second set of the tiebreaker here. Rituja serving. एक आसान वॉली, एक अच्छे प्लेसमेंट के रिटर्न में, और कोई दिक्कत नहीं हुई ओवरहेड स्मैश के लिए। तो टाई ब्रेकर का पहला अंक जुटाया अपनी सर्विस पर ऋतुजा ने। एक आसान प्लेसमेंट, वहां से कोई अवसर नहीं था रिटर्न के तौर पर। एक आसान वॉली दी गई। A few early points by either of the two players will definitely help them get an advantage and edge over the other. 1-all. And both the players seem to be making an equal number of mistakes here in this second set so far, you know, giving away opportunities and advantages to each other. कोशिश बैक एंड डाउन द लाइन की थी लेकिन उस एंगल को अच्छी तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाई। क्रॉस कोर्ट सर्विस थोड़ा सा डीप। एक 2 पर सर्विस करेंगी। टाई ब्रेकर चल रहा है। महिला एकल क्वार्टर फाइनल मुकाबला 36वें राष्ट्रीय खेलों की टेनिस प्रतियोगिता। A very well executed point there by Rituja, following it up to the net with a good approach and a good finish with the overhead cross court. रिप्ले जैसा लगा इससे पहले जो अंक अर्जित किया था इनसाइड आउट का, रिटर्न वॉली के तौर पर मिला। इस बार भी ऐसा ही हुआ।
22 Chamarthi. Slightly hesitant there, Rituja, and it costed her the point quite dearly. दे दो बॉल. There wasn't any body weight into that ball. She stood back to hit it, slightly hesitant there, and it ended in the net. नाखुश हैं अपने आप से. Chamarthi. We can see some anger and frustration there from Rituja. Both the players are now changing sides. It's the tie break in the second set. Sai Samita from Tamil Nadu leading 4-2. We'll see a change of sides every 6 points in the tie break. Rituja did start strong, but too many unforced errors there. I thought she would have gotten her confidence back. She should have continued the momentum she gained after winning 5 straight games in a row, being down 5-1 with a 6-5 lead, but couldn't capitalize on the momentum. अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट स्थित टेनिस सेंटर पर खेली जा रही 36वीं राष्ट्रीय खेलों की टेनिस प्रतियोगिता इस समय व्यक्तिगत मुकाबलों की तरफ बढ़ चली है. महिला एकल का क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है और ये अपने निर्णय की दहलीज पर पहुंचा है. आपके स्क्रीन पर स्कोर लाइन दिखाई दे रही है. इस तरफ ले लो. दूसरा सेट 6-6 की बराबरी पर है. टाई ब्रेकर चल रहा है. 5-2 से साई समिता आगे हैं. पहले सेट में 1-6 से परास्त होने वाली खिलाड़ी ने जबरदस्त खेल का प्रदर्शन किया है. 2-5 पर ऋतुजा सर्विस कर रही हैं. टाई ब्रेकर चल रहा है. मुश्किलों में है ऋतुजा, हालांकि बढ़िया खेल का प्रदर्शन किया. एक बेहतरीन विनर जिसके लिए वे जानी जाती हैं. बढ़िया फोरहैंड इनसाइड आउट. दर्शक आज थोड़े बहुत पहुंचे हैं लेकिन ये तादाद बढ़ेगी. मैं इस सेट की जानकारी हमारे दर्शकों को दे दूं. 1-5 डाउन चल रही थी ऋतुजा भोसले साई समिता के खिलाफ. वहां से लगातार 5 गेम जीतकर बराबरी हासिल की और टाई ब्रेकर में इस सेट को लेकर आई हैं. सेकंड सीड है ऋतुजा जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं. साई समिता अनसीडेड हैं. जिस तरीके का खेल सेकंड सीडेड ने दिखाया है जताता है कि वो किस कद की खिलाड़ी है. Strong first serve there by Rituja, getting her the much needed 2 points, shortening the lead to 4-5. It's never over till the last point is played, and I have to give Sai some credit here. She's hung in there despite the ups and downs. Doesn't have any big weapons, but she still stuck to the basics, kept playing the points. She's been very, very patient. Despite the up and downs in the match. Well, 2 set points there for Sai Smita. She's up 6-4 in the tie break of the second set. 5-1 से आगे थी इस सेट में. ऋतुजा ने बड़ा संघर्ष करने के बाद 6 ऑल किया टाई ब्रेकर में. फिलहाल 2 सेट पॉइंट हैं. नहीं पहुंच पाएंगी. थोड़ा भाग्य ने भी साथ दिया. फाइनली 1 सेट पॉइंट बचा है लेकिन अभी भी एक बाकी है. ये अपॉर्चुनिटी खोनी नहीं होगी क्योंकि सेट अगर ऋतुजा जीतती हैं तो इस मैच को जीत ले जाएंगी और सेमीफाइनल में दाखिल हो जाएंगी. सेमीफाइनल में पहुंच बनने वाली जद्दोजहद है. 1 सेट पॉइंट बाकी है और ये बहुत जरूरी है. मस्ट विन पॉइंट. और फाइनली इस सेट को जीता 7-6 साई समिता ने. तो कुल मिलाकर इस मैच में वापसी की है. एक समय पहले सेट को 1-6 से गंवाया था. दूसरे सेट में 5-1 की बढ़त हासिल की थी. जितने उतार चढ़ाव इस मैच में देखने को मिले हैं मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, टेनिस सेंटर पर इस एडिशन में 36वें राष्ट्रीय खेलों के इस संस्करण में
कभी भी टेनिस में इतने उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिले होंगे। Can you check the pressure of the ball? Well, it's Open the one cans. set all for both the Yeah. players. New The number can. 2 seed Rituja Bhosle playing Just check the against Sai pressure. Smita in the quarterfinals of the women's singles tennis tournament in the 36th national games here in Ahmedabad, Gujarat. It's been a seesaw battle between the two players. We saw Rituja very comfortably win the first set. Look at some of the highlights here. And keep it Sai back. stayed strong. A few early unforced errors there by Rituja gives Sai the much needed lead. She raced up One more. to 5-1 in the second set before Rituja fought her way back. She was up 6-5 Yes. but couldn't Okay. close it out, Just keep it on above. especially in the tie break. It's Time. one set all for both players. Out. Game. And second set. They've almost played Yes, sir. for an hour and a half. It's 12 o'clock Yeah. in the afternoon on Monday, October 3rd, here at the Sabarmati Riverfront in this wonderful tennis sporting arena. And we're watching a very interesting battle between these Sorry? two women tennis players. Side. ये दो खिलाड़ी एक टेनिस के बड़े स्वरूप को प्रदर्शित कर रहे हैं। 6-1 पहला सेट, दूसरा सेट 7-6 दूसरे खिलाड़ी ने जीता, लेकिन वो सेट सही। की जो जीत आई है, निर्णय आया है, उससे पहले जो देखने को मिला वो अभूतपूर्व था। 5-1 से साई समिता आगे थी, लगातार 5 गेम जीतते हुए, 4 गेम जीतते हुए 5-5 की बराबरी, फिर 6 ऑल, फाइनली टाई ब्रेकर में आया। कुल मिलाकर अपने खेल को और बेहतर किया, Final set. फाइनली सेट जीता, मैच में वापसी अपनी बनाए रखी और अब थर्ड सेट डिसाइडर। साई समिता की सर्विस के साथ एक अच्छा रिटर्न देखने को मिला। सर्विस रिटर्न बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता है। Love 15. थोड़ा सा लक ने भी साथ दिया। लव 15। एक अच्छा स्ट्रोक एक खिलाड़ी के खेल में उत्साह पैदा किया करता है, दूसरे खिलाड़ी के खेल में थोड़ा सा उत्साहन। क्या जबरदस्त बैक एंड क्रॉस कोर्ट था, एक और बेहतरीन सर्विस रिटर्न। लव 30। There's not much pace on either of Sai's serves, so it's important for Rituja to take the ball early, play from inside the baseline, just the way she did so in the first set. She has some very good serve returns and she has to use that to her advantage to shorten out the points. Just the stroke that I was talking about, she's quite comfortable taking the ball early from inside the court, and she has to keep doing that consistently, point after point, just to put herself in a better situation in this match. आपके शॉट को इस रिप्ले के जरिए समझा जा सकता है, किस खूबसूरती के साथ अपने आप को स्ट्रोक के लिए तैयार करना, डिस्पैच करना, एग्जीक्यूट करना अपने इरादों को। दबाव बनेगा अब। साई समिता ने दूसरा सेट जरूर जीता है, लेकिन बड़े संघर्ष के बाद बड़ी अपॉर्चुनिटी जो उन्होंने हासिल की थी 5-1 दूसरे सेट में बढ़त हासिल करते हुए, वो गंवाई थी। तमाम जद्दोजहद देखने को मिली उस सेट में, और वो संघर्ष दरअसल ऋतुजा के हिस्से में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेकर आया है और साई के हिस्से में थोड़ा सा दबाव बनाएगा। कई बार जीत से ज्यादा मोमेंटम काम किया करता है। मोमेंटम ऋतुजा के हिस्से में आया है, जीत जरूर पिछले सेट में साई के हिस्से में आई, लेकिन खोया मोमेंटम ऋतुजा ने हासिल किया, वो दिखाई दिया। आपने पहले ही गेम में ब्रेक हासिल किया है। An easy break of serve here.
keep trying and going for your shots. You know, there are going to be times when you're going to be missing, but if you can keep your unforced errors to a minimum and keep going for your shots, it's going to put a lot of pressure on your opponent. And that is exactly what Rituja did in this first game of the third set. This has been her strength so far, and she has to continuously keep doing that again and again, you know, to make it easier for herself. She enjoys taking the ball early, getting inside the court to finish off the points, and you cannot get stuck in the opponent's style of play, trying to return and keep the balls in. तीसरे सेट का दूसरा गेम, एक बेहतरीन डीप सर्विस, गति है, ताकत नहीं थी उसके पीछे, कौशल था, आपकी योग्यता थी। 15 लाओ। पिछली बार एंगलिंग सर्विस, इस बार डाउन द मिडिल, परेशानियां पैदा करती हुई। एक और बढ़िया सर्विस, एक वीक रिटर्न और आसान फिनिश। 30 लाओ। Big forehand down the line, very confidently hit there. It's a high risk shot and one has to be very confident to be able to execute that at important occasions. Very comfortable hold there by Ritujavi. You know, it's clearly evident that she has the capabilities and the caliber to hit some strong first serves, attack really well, and she has to continuously do that throughout the match. You know, you cannot let a few points here and there affect you and get to you. And that's when you know, start doubting your abilities and make a lot more errors in the process. तीसरा गेम, एक बार फिर बहुत मुश्किलों भरा रिटर्न साई समिता के लिए। आपने एक अच्छी बात ध्यान दिलाई थी अंकिता कि टफ गेम आपको आगे के लिए फोकस किया करता है, जबकि आसान जीत आपके लिए थोड़ी सी मुश्किलें पैदा किया करती है। ये हिस्से में आया था दरअसल ऋतुजा के लिए। सेकंड सेट में एक ब्रेक दे दिया, दूसरा ब्रेक कब चला गया मालूम नहीं पड़ा, देखते देखते 1-5 डाउन हो गई, तो सब कुछ हाथ से निकल रहा था। लेकिन अब वापसी, अब ये खिलाड़ी वापस लौटने नहीं देना चाहेगा और दिख रहा है उनके खेल से वो रिदम, वो मोमेंटम मिल चुका है ऋतुजा को। Love 30. Fantastic forehand cross court there by Rituja. Really caught the ball early. A good angle there, helped her finish off the point very quickly. Good hustle there. Much more confidence there in her approach. I can see that bounce in her step. It's back. Lot more attacking display of tennis here by Rituja Bhosle, the second seed of this tournament. 3 break points there to take a comfortable 3-love lead. आप जब प्रतिष्ठा पर प्रहार किया करते हैं ना, तो रिजल्ट ऐसे आया करते हैं। ऋतुजा संकट में थी, समझ में नहीं आ रहा था कहाँ गलती हो रही है, क्रूज करती गई लगातार। लेकिन
अब कोई चांस नहीं देंगी। तीसरी लगातार जीत, एक आसान होल्ड देखने को फिर से मिला। 3-0। Break of serve there by Rituja Bhosle, and sometimes it's important to just to analyze the situation, think of what you can do better, not focusing on the opponent, but introspect on your game. Just think about what you can do to make points shorter and easier for yourself, and that is exactly what was needed here from Rituja. She's back with a spring and a bounce in her step. She's attacking those balls well, good first serves, and she certainly seems to be dictating the match in this third set. अब नहीं जाने देंगे इस मैच को, जहां तक दिखाई दे रहा है। साई समिता प्रेशर में है, उनके चेहरे के भाव बता रहे हैं, जबकि बिल्कुल कूल काम शांत भाव से मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले थोड़ा सा आश्वस्त नहीं थी, उनके हाव भाव बता रहे थे अपने आप से नाराज थी। रैकेट भी उन्होंने एक बार फेंका था तो लग रहा था अपने आप से नाराज हैं। और खिलाड़ियों के खेल के दौरान ऐसे अवसर आते हैं जब कुछ गलत स्ट्रोक्स, कुछ गलत परिस्थितियां आपको बहुत विचलित किया करती हैं, लेकिन उन सब से दूर आ चुकी हैं। अब मैच में कमांडिंग पोजीशन पर 2 ब्रेक हासिल किए हैं 3 गेमों में, तो आपके पास सब कुछ है, रिदम भी है, कॉन्फिडेंस भी है, पॉइंट्स भी हैं। 3-0 अब 4th गेम। Level 15. Well, Rituja going for the short cross court, but she gets off balance, falling too early before hitting the stroke. Some fantastic forehands there by Rituja on all the corners of the court. She's clearly attacking Sai on both sides, finding those perfect spots to put that ball away. Sai questioning that deep ball line call. She thought it went long. A very close call there by the chair umpire. Well executed shot there by Rituja. Good out wide serve there, giving her the perfect opportunity, and a high shot ball to finish off the point cross court. एक बेहतरीन इनसाइड आउट देखने को मिला था, उसका रिटर्न वीक हासिल हुआ, इसको बहुत कंट्रोल के साथ फिनिश के तौर पर इस्तेमाल किया ऋतुजा ने। Well, the serves are going strong. Another strong hold there by Rituja, giving her a 4-love lead in the third. You know, tennis tests not only your physical, it's not only a physical test, but it also tests you mentally. You know, you have to be really strong to be able to
pull yourself out of tight नीचे pressure रखो, नीचे new situations, balls to सारी be नीचे able to रखो. think clearly, in such situations, Keep the new to balls on the understand ground. what may be happening, what may go wrong against you, and to Keep be the able old to balls, do old balls what's अंदर डालो पहले. right. दक्षता, Such old balls analysis अंदर by डालो पहले. good players help them, इसको दो. really raise their level of game just when it's needed. We've seen some of the top players of the world do it again and again in very, very big events, whether it's the Grand Slam finals or Masters, and that is why they're called the legends of this game. They play the most extraordinary points at the toughest situations and execute it very beautifully. अब थोड़ा सा दबाव ज़्यादा रहेगा. गेम होल्ड करना, सर्विस होल्ड करना सबसे बड़ी आवश्यकता साई समिता के लिए, लेकिन विपक्षी बिल्कुल भी तैयार नहीं है, बिल्कुल राजी नहीं है. अब आपको कहीं से भी जगह देने का इरादा नहीं है. क्या खूबसूरती के साथ इस अंक को अर्जित किया. एक बेहतरीन सर्विस रिटर्न और उसके बाद एक आसान ड्रॉप. नेट पर आने के बाद इस तरीके का प्लेसमेंट आसान नहीं होता. लव 15. तीसरे सेट में अभी तक कोई गेम गवाया नहीं है और सही अर्थों में साई समिता ने इस तीसरे सेट में किसी भी गेम में बहुत ज़्यादा संघर्ष भी नहीं किया है. वन साइडेड सेट चल रहा है, जबकि सेकंड सेट अद्भुत था, अभूतपूर्व था. 15 ऑल. Strong forehand there, jamming Sai Smita right in the center of the court. This jam in the body is what a lot of players learn. It's a very effective way to return serves, especially when a big one is thrown at you. It gives the player no room to be able to hit the open court or an angle, despite hitting a big first serve. Rituja going for too much too soon. I think there wasn't enough pace on this serve and not enough height on that ball either. Sometimes it's important to add more trajectory to the stroke to minimize the risk of errors. Another forehand in the net there by Rituja. क्या मैच में एक और बदलाव आएगा. थोड़ा सा स्ट्रगल किया है इस गेम में ऋतुजा ने. 40-30, 40-30. एक बेहतरीन सर्विस रिटर्न, डबल एंडेड बैक इन क्रॉस कोर्ट. रिड्यूस 40-40 की बराबरी. Rituja doesn't want to make the same mistakes she made in the second set. She's making sure she's staying in there, hanging in there, playing each point to its merit. A few casual points proved to be too costly in the second set there for Rituja. Advantage एक अच्छा फोर क्रॉस कोर्ट रिटर्न, एडवांटेज हासिल किया है. लगातार तीसरे ब्रेक की तरफ बढ़ती हुई, ये अपने आप में अद्भुत है. सेकंड सेट में 1-5 डाउन चल रही थी, वहां से जो उन्होंने गेम जीतने शुरू किए हैं, बहुत ज़्यादा चांस दिए नहीं हैं. केवल एक गेम गंवाया, जिससे बराबरी हासिल हुई. टाई ब्रेकर में मैच गया, सेकंड सेट गया.
Good exchange of forehand cross courts there by both players. Rituja clearly the better of the two here. Breaking serve and racing up to a 5-love lead in the third. It's one set all for both the players from Maharashtra and Tamil Nadu. Rituja winning the first set 6-1. Sai coming back strongly in the second, winning it 7-6. And it's Rituja now that's going to serve out for the set and match. It's the quarterfinals of the women's singles event at the 36th National Games here in Ahmedabad, Gujarat. A hot sunny day, the players clearly competing against each other and the heat on the tennis court. कितना आसान लग रहा था। अगर आप फर्स्ट सेट का स्कोर देखें 6-1 ऋतुजा के पक्ष में, ऐसा लगा कि ये मैच एक तरफा जाएगा, लेकिन उसके बाद जो परिस्थिति बनी वो 5-1 लीड थी साई समिता के हिस्से में। तब लगा कि बराबरी का मुकाबला चल रहा है, लेकिन ऋतुजा ने उस सेट में वापसी की, 6-6 की बराबरी हो गई, टाई ब्रेकर में मैच गया, सेट गया। तो ज़बरदस्त उतार चढ़ाव रहे हैं, लेकिन उसके बाद जब तीसरे सेट की तरफ नज़र दौड़ाएं तो 5-0 ये किसी भी सेट में सबसे बड़ी बढ़त कहलाती है। इसके बाद तो सेट एक खिलाड़ी के पक्ष में जाता है, लेकिन 5-0 सबसे बड़ी लीड है किसी भी सेट में डिसीजन होने से पहले की। Beautifully played in this point. Rituja Bhosle, strong first serve out wide, giving her the perfect opportunity to wrong foot her opponent. Unlucky there. The return of serve, catching the net, throwing Rituja off guard. केवल होल्ड की आवश्यकता है, अपनी सर्विस होल्ड करती हैं, इस मुकाबले को जीत ले जाएंगी। 5-0 अब चल रही हैं सेकंड सीड ऋतुजा भोसले। एक बेहतरीन सर्विस देखने को मिली। 30-15 कॉन्फिडेंस किस तरीके से बढ़ा करता है जब आप जीत के नज़दीक पहुंचा करते हैं। ऋतुजा ने एक बार फिर इसका उदाहरण प्रस्तुत किया, एक बढ़िया एस देखने को मिली। गुजरात का साबरमती रिवर फ्रंट टेनिस के शानदार खेल का गवाह बन रहा है। यहाँ का खूबसूरत टेनिस सेंटर कोर्ट पर आप देख पा रहे हैं टेनिस के आकर्षक मुकाबले। ये मैच चल रहा है महिला सिंगल्स का, लेडीज फॉलोड बाय अ डबल फॉल्ट। What an unusual sight here it is today. Well, this match has had nothing usual here so far. A seesaw battle between both the players. मैं बता रहा था हमारे दर्शकों को, सेकंड सीट खिलाड़ी ऋतुजा लेडी सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में मुकाबला कर रहे हैं। मैच पॉइंट, सेट पॉइंट और 2 अवसर हैं, 2 सेट पॉइंट हैं, 2 मैच पॉइंट हैं इस मुकाबले में। ऋतुजा की सर्विस, रिटर्न गया बाहर। ऋतुजा पहुंची सेमीफाइनल में। तो 36वें राष्ट्रीय खेलों की टेनिस प्रतियोगिता में महिला एकल में पहली सेमीफाइनलिस्ट बनी हैं महाराष्ट्र की ऋतुजा भोसले, सेकंड सीड इस खिलाड़ी ने। मैं आपको याद दिला दूं, अंकिता रैना जो टॉप सीड हैं उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। तो फेवरेट इस महिला एकल में जो खिलाड़ी हैं वो सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। महाराष्ट्र की ऋतुजा भोसले ने परास्त किया। स्कोर लाइन आपके स्क्रीन पर है, 6-1, 6-7, 6-0। तीसरा सेट अपनी प्रतिष्ठा, अपने सम्मान, अपनी योग्यता के अनुसार जीता है ऋतुजा भोसले ने। 2-1 से परास्त किया, सेमीफाइनल में जगह बनाई। साई समिता दुर्भाग्यवश कड़े संघर्ष के बाद यहां से बाहर होंगी। Well, it's Rituja Bhosle that finally is declared the winner of this quarterfinals encounter between the Maharashtrian and the Tamil Nadu player. She will be playing the winner of Zeel Desai and Vanshika Chaudhary, who will also be competing today in this women's singles quarterfinal match. Some of the highlights of the matches so far:
There was nothing ordinary here in this match. A seesaw battle between the two players. Just when we thought Rituja would comfortably win the second set after winning the first set, a few casual errors there. Game, set, a match. She Bosley, lost some confidence along the way, was down 1-5, got back into the match by making it 5-all, raced up to a 6-5 lead but could not finish it in the second set. She needed one more set there to finish it off in style. इस तरीके से ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला संपन्न हुआ। 36वें राष्ट्रीय खेलों की टेनिस प्रतियोगिता में महिला एकल का जो क्वार्टर फाइनल आप देख रहे थे वो अब संपन्न हुआ है। थोड़ी देर बाद अगला मैच रहेगा मैन सिंगल्स क्वार्टर फाइनल, जहां टॉप सीड अर्जुन कड़े मुकाबला करेंगे गुजरात के ध्रुव विक्रम हिरपारा से। ये मैच थोड़ी देर बाद प्रारंभ होगा। उस आकर्षक मुकाबले को लेकर हम आपसे फिर जुड़ेंगे, तब तक के लिए आज्ञा चाहेंगे। नमस्कार।
में कमेंट्री करेगी और ये मैच होगा क्वार्टर फाइनल मैच, मेन सिंगल्स का क्वार्टर फाइनल मुकाबला होगा। एक और है, एक तरफ है महाराष्ट्र के अर्जुन कड़े जो वरीयता क्रम में नंबर 1 है इस प्रतियोगिता में, और दूसरी तरफ होस्ट टीम के ध्रुव रिपारा गुजरात के। और अर्जुन कड़े जैसे मैं बता चुका हूँ, कि अर्जुन कड़े जो है वो वरीयता क्रम में नंबर 1 की रैंकिंग प्राप्त कर चुके हैं और वे 28 वर्ष के हैं और काफ़ी अनुभवी हैं, जबकि ध्रुव रिपारा 19 वर्ष के हैं और बहुत कम अनुभव है उनका। वो 23वें सीड हैं इस टूर्नामेंट में और 12 वर्ष से, जब वे 12 वर्ष के आयु से वे टेनिस खेलना उन्होंने शुरू किया, जबकि अर्जुन कड़े ने शुरू किया जब वे 6 वर्ष के थे। और अर्जुन कड़े के जो एटीपी रैंकिंग थी 2018 में उनकी रैंकिंग थी 328 और उनके करियर की ये सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग रही, पर इस समय उनकी एटीपी रैंकिंग है 528 और उन्होंने 3 ITF टूर्नामेंट जीते हैं, जबकि ध्रुव की जूनियर रैंकिंग है, एटीपी की सीनियर में रैंकिंग नहीं है और उन्होंने AITA के 4 टूर्नामेंट जीते हैं। एक और है टॉप सीड और एक और है उभरता हुआ खिलाड़ी। चुनौती ध्रुव के सामने बहुत ही बड़ी, पर ये एक अवसर भी है, एक बहुत सुनहरा अवसर कुछ कर दिखाने का, कुछ सीखने का। जहां तक अर्जुन कड़ू है, उनकी निगाहें तो स्वर्ण पदक पे रहेगी। इस मैच को वो जीतना चाहेंगे और उसके बाद वे सेमीफाइनल और फाइनल भी जीतना चाहेंगे। पर जहां तक ध्रुव रिपारा का सवाल है, उनके लिए यहाँ तक पहुँचना भी बहुत बड़ी बात है। वे अमरेली ज़िला के एक छोटे से गांव से आते हैं और उस गांव के ये पहले टेनिस प्लेयर हैं और अगर ये मैच वे जीतते हैं तो वे सेमीफाइनल में प्रवेश करेंगे और उनको एक पद निश्चित रूप से मिलेगा, कांस्य पद तो निश्चित रूप से मिलेगा अगर वे ये मैच को जीतते हैं। पर इस समय उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती, और जब भी नंबर 1 सीड के सामने कोई भी खिलाड़ी होता है तो 2 चीज़ें हो सकती है। एक तो हो सकता है कि क्योंकि उसको पता है कि अगर ये मैच जीतेगा तो उसको बहुत ख्याति प्राप्त होगी, तो हो सकता है कि वो और ज़्यादा कोशिश करे और ज़्यादा इंस्पिरेशन से खेले। अंकिता भी, जो मेरे साथी कमेंटेटर है, वो भी नंबर 1 रह चुकी है। तो अंकिता, ये क्या होता है जब टॉप सीड से दूसरा खिलाड़ी खेलता है, तो क्या वो ज़्यादा कोशिश करता है कि कुछ ना कुछ उसको फेम मिल जाए? See, there is a saying, you have nothing to lose, and when you have nothing to lose, you tend to give it your best. You go all out. You're not under pressure. You are the underdog in this situation, and that's when you can openly play your game. You try for shots that you wouldn't play in normal tough situations, and sometimes that does prove to be dangerous for the opponent because they have all the pressure. They are the ones who are expected to win. And you suddenly have an opponent playing shots out of nowhere, unexpected shots that you have not prepared for, and that's when sometimes the situation gets tricky. 50 love. अर्जुन की सर्व काफी ताकतवर सर्व और 15 लव की बढ़त सीधे ही वे अपने फॉर्म में दिख रहे हैं। डबल फिस्टेड बैकहैंड रिटर्न और अर्जुन अपने ग्राउंड स्ट्रोक को टाइम नहीं कर पाए। 15 ऑल। शक्तिशाली सर्व पर एक्यूरेट नहीं रहा, फॉल्ट। Sorry, 15. Both the players getting comfortable, on the court, assessing the situation here. It's Arjun Khare from Maharashtra versus Dhruv Hirpara.
Dhruv, having come up from a very tough match yesterday, he barely managed to scrape through in 3 sets. The toughest encounter that took place yesterday between Dhruv and Yash Churasia, where Dhruv Hirpara finally won the 3rd set 6-4. A very keenly contested match that was. उस मैच में ध्रुव ने कई बार वापसी की लव 40 डाउन से भी, तो उनमें एक फाइटिंग स्पिरिट है. एस अर्जुन की सर्विस ऑलरेडी फुल स्पीड पर है अंकिता. Well, it's Arjun Khade, the favorite for this event, cement singles event here. He's the top seed of the tournament. All the seeded players have comfortably managed to reach the quarterfinal stage. They will all be competing against their respective opponents today, this afternoon, and it will be interesting to see whether Dhruv is able to match Arjun and his pace here today. Arjun has had a nice, I would say a very successful pro circuit, some interesting victories here so far. He's been focusing a lot more of doubles on the international tour, having won 3 ATP doubles titles, 2 80,000 and 150,000 so far. He also made the finals with different partners each time. That's very tough to achieve. येलो जर्सी में लोकल लैड ध्रुव. काफी लंबी रैली रही इस बार और दोनों ने काफी शॉट्स खेले हैं और एक स्लाइस, बैकहैंड स्लाइस देखने को मिला अर्जुन की तरफ से. और ध्रुव भी कंफर्टेबल हैं, बेस लाइन से रैली करते रहे, पर इवेंचुअली थोड़ा सा फोर्स ज़्यादा अर्जुन से और मिस टाइम कर बैठे अपने शॉट. Arjun trying to take the advantage early on, did set up the point well, but was unable to put it out in the end, going way too long. एक बार अर्जुन ने नेट की तरफ अग्रसर जरूर किया था, पर अभी तक ध्रुव से हमने नहीं देखा नेट की तरफ बढ़ने के लिए. वे बेसलाइन से ही खुश हैं अभी तक इस मैच में. फर्स्ट सर्व की प्रतिशत बढ़ानी पड़ेगी अर्जुन जैसे प्रतिद्वंदी के खिलाफ. Well, it's Dhruv trying very hard to match Arjun's pace and depth, stroke after stroke, falling short on this occasion here. Really pushed back on the back foot, and it becomes very difficult to execute shots when you're not in a good position to play it across. बहुत क्रैम्प थे उस इनसाइड आउट शॉट खेलने के लिए, बिल्कुल जगह नहीं थी, शरीर के बिल्कुल पास थी वो बॉल और नतीजा आउट. Good serve there by Dhruv down the tee. 30 ऑल अपने सर्विस पे. ध्रुव को अपना सर्व होल्ड करना अनिवार्य ध्रुव के लिए. अभी तक फर्स्ट सर्व का प्रतिशत बहुत कम. पावरफुल फोरहैंड से डाउन द लाइन और क्रॉस कोर्ट अंकिता अर्जुन की. Yeah, he's very comfortable from the baseline. Arjun has been playing singles on the ITF circuit for quite a few years now.
काफी अच्छा सेटअप किया ध्रुव ने इस बार और ब्रेक पॉइंट बचा के 40 ऑल पे लेके आए अपने सर्विस पर। ध्रुव कड़ी संघर्ष कर रहे हैं, उनमें फाइटिंग स्पिरिट है और वे जल्दी हार नहीं मानते हैं, उनमें कंसिस्टेंसी भी है, पर इस समय चुनौती बहुत ही कड़ी उनके सामने। फर्स्ट सर्व का प्रतिशत उन्हें बढ़ाना पड़ेगा, तब दबाव बनेगा ओपोनेंट के ऊपर। फिर से एडवांटेज गया ओपोनेंट की तरफ। Well, it's the first another break point there for Arjun to grab an early lead in the first set of this match, the quarterfinal singles men's match here today. A deep return of serve there by Arjun, following it up very beautifully at the net, and a finish there gives him a 2-love lead in the first set. Arjun has also enjoyed some success in the two ITF futures that took place here in India in February and March. He won the singles title in Bhopal and the singles and doubles title in Bangalore. So he's been doing really well in doubles along with some impressive results in singles as well. He enjoys a ranking of 135 in the world in the ATP doubles. बहुत ही अनुभवी और कामयाब खिलाड़ी हैं अर्जुन, और वही दर्शन, उसी का दर्शन दे रहे हैं इस मैच में। बेस लाइन से ही ये रैली चली और एक अनफोर्स्ड एरर अर्जुन से, पहली बार इस मैच में एक अनफोर्स्ड एरर देखने को मिला अर्जुन की तरफ से। A little hesitant in hitting that backhand. The ball was low and didn't have enough pace in it, but Arjun didn't do much to ensure that the ball crosses the net. स्लाइस अटेम्प्ट किया उन्होंने, पर फॉल्ट आउट गया। और लव 30 एक बहुत ही सुनहरा मौका ध्रुव के लिए, अर्जुन के सर्विस को ब्रेक करने के लिए। इस समय 2-0 से पिछड़े हुए हैं, एक ब्रेक से भी पिछड़े हुए हैं, और यही मौका है और इसे हाथ से नहीं गंवाना चाहिए ध्रुव को। A big serve there, giving him the perfect opportunity to hit that easy overhead, and he put it away very effectively. यही है चैंपियन की निशानी, they play big at the big points. Another big serve there by Arjun, clearly enjoying the benefits of a good first serve. It certainly gives you an edge over the opponent. You know, big serves constantly putting a lot of pressure on the receiver to be able to hit those returns deep and into the corners. And gives you the much needed easy points, as I would say, to comfortably help you hold serve. बहुत अच्छा रैली इस समय, और ध्रुव ने भी कोर्ट कवरेज काफ़ी अच्छा रहा, कोर्ट कवरेज ध्रुव का, और थोड़ी वेरिएशन भी थी उनमें। डबल फिस्टेड बैकहैंड बेसलाइन से खेल रहे हैं, और अब 30-40 की लीड है उनके पास। ये ब्रेक पॉइंट है अंकिता। Not the volley that you would want to miss, giving Dhruv
a chance to get an early break here. Arjun was enjoying a 2-love lead in the first set. A break here, and Dhruv is back on the board. Arjun up 2-1 in the first set. ध्रुव के लिए पहला पॉइंट, पहला गेम इस मैच में, और वो भी एक ब्रेक के जरिए। उनकी सब ब्रेक हुई और अर्जुन ने 2-0 की बढ़त अर्जित कर ली थी, पर अब ध्रुव ने बहुत ही अच्छी वापसी की, बहुत अच्छा कमबैक। उन्होंने अर्जुन को कड़ा मुकाबला दिया और हर स्ट्रोक के लिए उनके पास जवाब था। अर्जुन के दबाव में आए और 1-2 अनफोर्स्ड एरर भी किया उन्होंने। उनकी सर्विस अच्छी रही, उसके बावजूद ध्रुव ने उस सर्विस को ब्रेक कर लिया, और ये एक बहुत ही बड़ा मोरल बूस्टर रहेगा ध्रुव के लिए इस समय। अब अगर ये होल्ड कर लेते हैं अपने सर्व को, तो फिर ये मैच बराबरी पर आ जाएगा और वहां से बहुत ही दिलचस्प हो सकता है। Well, giving you the updates of the other men's singles quarterfinal matches that took place this morning. Second seed Manish Suresh Kumar defeated Shivank Bhatnagar of Delhi 7-6, 6-3. Third seed Prajwal Dev of Karnataka defeated Abhinav Sanjeev of Tamil Nadu 7-6, 6-2. Interesting here, the seeded players struggling a bit, but have managed to make it to the semi-finals. It's showing you live here some live matches here today. We have Arjun Khare, who is currently playing and competing on court. He's the top seed, and he is competing against Dhruv Hirpara, a local lad from Gujarat. येलो जर्सी में ध्रुव और परंपरागत नीली जर्सी, महाराष्ट्र की परंपरागत नीली जर्सी में बहुत शक्तिशाली रिटर्न और लव 15 की बढ़त मिल गई अर्जुन को। यही है अर्जुन की खासियत, उनकी शक्ति बेसलाइन के पास खड़े रहते हैं और उसके बाद टू हैंडेड, और इस बार उन्होंने डबल फिस्टेड बैकहैंड के जरिए ये सर्विस रिटर्न किया। एक स्लाइस करने का प्रयास ध्रुव का विफल हुआ और लव 30 से पिछड़ गए अपने ही सर्विस में। लंबी रैली, फिर उन्होंने परिवर्तन के तौर पर स्लाइस करने की कोशिश की। स्लाइस से बाउंस कम होता है, पेस कम होता है, पर इस बार वे सफल नहीं हुए अपने प्रयास में। What a fabulous display of tennis. Dhruv, he's clearly the underdog, not expected to win, but he's fighting it out, giving it his best. He clearly showed us his fighting spirit yesterday in a long contested match against Yash Churasia. And he's clearly not overawed playing the top seed of the tournament here today. We've definitely seen him trying to make the best of the situation. Go! $15-40 पे सर्व करते हुए, पर अपने सर्विस में ये पहला अंक अर्जित किया इस गेम में। उन्हें किसी तरह अपने सर्विस को बचाना होगा इस मैच में और इस सेट में बरकरार रहने के लिए। अर्जुन कड़े नंबर 1 सीड है और जब भी मौका मिलता है वे छोड़ते नहीं हैं। बहुत अवसरवादी खिलाड़ी। और एक बार फिर बहुत शक्तिशाली रिटर्न और उसी के साथ ये सर्विस ब्रेक
और अर्जुन 3-1 से आगे हो गए हैं। अर्जुन ध्रुव के सेकंड सर्व को एकदम प्रहार करने पे लग जाते हैं। जब ध्रुव की फर्स्ट सर्विस अच्छी आती है, ठीक होती है, तब बैकफुट पे चले जाते हैं अर्जुन और तभी पॉइंट अर्जित होता है ध्रुव के लिए। उनका सेकंड सर्विस थोड़ा कमज़ोर और उस पे अर्जुन एकदम प्रहार कर बैठते हैं। दोनों ही सर्विस उनकी ब्रेक हो गई। अभी तक अपने सर्विस को होल्ड करने में नाकामयाब ध्रुव और इसी के कारण 3-1 से पिछड़े हुए हैं। उसके ठीक विपरीत है अर्जुन। बहुत ही शक्तिशाली फर्स्ट सर्व और उसके बाद उन्होंने ध्रुव को कोर्ट के दोनों तरफ शॉट्स खेल के, कभी क्रॉस कोर्ट कभी डाउन द लाइन खेल के बहुत कोर्ट में दौड़ाया। आखिर ध्रुव ने भी पूरी कोशिश की पर आखिरकार उनका डबल फिस्टेड बैकहैंड नेट में गया और अर्जुन इस समय 30 लव अपने सर्विस पे 3-1 से आगे। देना मत, वो देना मत। लेट फर्स्ट सर्विस। Arjun going for way too much there. You know, 30, 50. placement was all that was required. He was in a comfortable position. Surprisingly, he did manage to get broken in the previous game and from the other side, and that was the only game that he has lost in this set so far. Dhruv has unable to hold serves even on one occasion. 40-15. A big first serve there by Arjun, racing up to a 40-15 lead. A chance to comfortably hold serve and get a 4-1 lead in this set. What a beautiful serve and a treat to watch. Arjun, that was a huge ace. He races up to a 4-1 lead in the first set. Very comfortably managed to hold serves this time, unlike the previous where a few unforced errors and Dhruv managed to get that one game out of them. दो बहुत ही शक्तिशाली सर्व रहे, दोनों एस, दोनों डाउन द मिडल और ध्रुव के पास कोई उत्तर नहीं था उन दोनों शक्तिशाली सर्व्स के सामने और बहुत आसान सा पॉइंट अर्जित किया अपने लिए अर्जुन ने। अब 4-1 से उन्होंने लीड ले लिया है और अभी तक ध्रुव ने अपना सर्विस होल्ड नहीं किया इस मैच में, तो बहुत ही दबाव पे इस सर्विस पर किसी तरह उन्हें होल्ड करना पड़ेगा और उसके बाद अर्जुन को 2 बार ब्रेक करना पड़ेगा, तभी वे इस सेट में वापसी कर सकते हैं। पूरी कोशिश जरूर कर रहे हैं पर दोनों खिलाड़ियों के बीच बहुत बड़ा फासला। Some of the highlights from the previous games. Arjun really putting a lot of pressure on Dhruv. Dhruv unable to handle the pace at times. अर्जुन की लंबाई है 6 फुट 3 इंच और बहुत पावरफुली बिल्ट है। ध्रुव 5 फीट 9 इंच और थोड़े से लाइट बिल्ड है, तो इसीलिए काफ़ी फिटनेस और ताकत दोनों ही अर्जुन के पक्ष में, अनुभव भी अर्जुन के पक्ष में और तजुर्बा भी अर्जुन के पक्ष में। ध्रुव के सामने बहुत बड़ी चुनौती, इस सर्विस को किसी तरह उन्हें होल्ड करना पड़ेगा और उनमें भी फाइटिंग स्पिरिट है। Well, the ball was called out. Arjun hitting it long.
It's 15 love for Dhruv. It's 1 o'clock Monday afternoon, 33 degrees Celsius, quite hot. And it's even hotter on the tennis court, like I've mentioned before. Tough situation for the players to be playing in. Whoa! They've already faced a few tough days so far. It's been a tiring week. They've been competing in their respective, both the men and the women have been competing in their team's event. Sorry, love. Amazing display of shots here by Dhruv, really stretching Arjun out on that forehand and coming up with a perfectly placed shot inside out. यहाँ पर इनका टेनिस एक्यूमेन भी देखने को मिला कि बहुत अच्छा प्लेसिंग किया रॉन्ग फुट पे कैच करके, तो ये एक युवा खिलाड़ी के लिए बहुत अच्छा। 40 love. It's enjoyable to see, Dhruv not getting overawed by the opponent and his big serves. He's trying to put in his best, even though he hasn't been able to hold serves till now. But he's still, pushing his opponent to the limit, hitting to the best of his ability. नथिंग टू लूज, आपने ही थोड़ी देर पहले बताया था कि लोअर सीडेड खिलाड़ी के लिए नथिंग टू लूज होता है, और शायद वही स्पिरिट से ध्रुव इस समय खेल रहे हैं। Game Hirpara. Pass the ball, please. Very risky shot there by Arjun, giving Dhruv the chance to hold But it serves is for the 4 games first to time 2. in this match. Arjun still enjoys a very comfortable lead. He's serving at 4-2. पर ये वाला गेम बहुत ही आसानी से ध्रुव ने अपने लिए अर्जित किया, लव पे अपने सर्विस को होल्ड कर लिया, और ये तो बहुत ही बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा ध्रुव के लिए अर्जुन के खिलाफ, टॉप सीड के खिलाफ लव पे सर्विस होल्ड करना। 50 love. What a smooth put away there by Arjun. Big serve. The ball barely managed to cross the net, making it very easy to finish off the point. Very well played there by Dhruv. He was really stretched out wide by Arjun, but very risky shot to play in such a situation and managed to pull it through. इस समय इन्हें ये गेम पे मेक और ब्रेक है, तो शायद उन्हें रिस्क लेना भी पड़ेगा, तो उन्होंने रिस्क लिया और उनके पक्ष में गया। एक और शक्तिशाली सर्व अर्जुन का, और जब अर्जुन प्रेशर में होते हैं तो एक बहुत अच्छा सर्व निकालते हैं। Sorry, 15. और अर्जुन के पास सर्विस में विविधता भी है। ध्रुव ने एक बार अर्जुन को ब्रेक किया है इस सेट में। और काफी पावरफुल फोरहैंड क्रॉस कोर्ट, जो अर्जुन प्रेशर में आ गए उसके बाद और अपने आप को संभाल नहीं पाए और प्लेसमेंट खराब हो गई, और ध्रुव को अच्छा मौका। Dhruv has definitely raised the level of his game and seems to be giving Arjun a very tough fight. He's really pushing him to go for those angles and to hit shots that he's clearly not very comfortable with. His go-to serve so far, every time he's in a tough spot, the out wide serve definitely helps him get out of trouble. It seems to be like the go-to card he uses in the tough situations. और ये सेकंड सर्व था, उसके बावजूद
Game Kare. Another big serve there by Arjun. Kare leads 5 And a games to very 2. smooth volley there at the net. It was very low and he took it really comfortably. इस पर ध्रुव का रिटर्न काफ़ी अच्छा था, पर अर्जुन एकदम तैयार थे उस लो वॉली के लिए और उन्होंने अपना डिलेक्टेबल टच दिखाया. उसमें शक्ति नहीं थी, पर उसमें एक टच था. टच टेनिस का भी एक झलक दिया. 5-2 से आगे अर्जुन, और अगर ध्रुव को ब्रेक करते हैं तो ये सेट उनके फायदे में. स्कोर 5-2 है और निश्चित तौर से अर्जुन ध्रुव से काफ़ी बेहतर खिलाड़ी हैं, अनुभवी भी हैं और उम्र में भी 6-7 साल बड़े हैं. पर ये मानना पड़ेगा कि ध्रुव ने अपनी तरफ से बहुत मेहनत किया और बहुत चुनौती दिया, और ये वन साइडेड नहीं है. कंफर्टेबल जरूर है अर्जुन, पर थोड़ा बहुत ध्रुव ने उनको वरी जरूर किया. अंकिता, Yeah, not a lot of experience behind him, Dhruv Hirpara from Gujarat, but he definitely seems to be stretching Arjun in every game, even though the score line doesn't indicate, the long rallies that they have both been playing, but clearly a good fighting spirit from Dhruv. He's playing to his advantage. He's playing, he's hitting shots that he is comfortable with, and he's trying his best to really push Arjun in this match so far. गो टू सर्व नहीं है, पर फिर भी अच्छा सर्व, और अर्जुन का थोड़ा कैजुअल रिटर्न दिखा ये, और 15 लव की बढ़त अपने सर्व पे. A strong returner serve followed by a good forehand cross court. Arjun very comfortable from no man's land, making sure there is no reply to his shots. रैली, और इस बार अर्जुन चूके, और ध्रुव का फाइटिंग स्पिरिट मानना पड़ेगा. वे पूरी कोशिश करते हैं, कभी हार नहीं मानते हैं, और इस बार भी उन्होंने काफ़ी कोर्ट कवरेज किया और फलस्वरूप एक अंक अर्जित किया. 30-15 से अपने सर्व में आगे. ही स्ट्रॉन्ग फोरहैंड क्रॉस कोर्ट है अर्जुन का, और उसी के बदौलत बहुत टाइट सिचुएशंस में उन्हें पॉइंट मिल जाता है. Slightly unlucky there. Dhruv did play the point very beautifully. A strong out wide serve, followed it up with a perfectly placed forehand, but the net cord clearly caught him by surprise. You've got to be very quick on your feet to be able to win such points. इसलिए पॉइंट में ध्रुव की गलती नहीं मानी जा सकती, बस दुर्भाग्य रहा. Dhruv really fighting it out, giving it his best, stretching Arjun.
to try the unexpected and clearly being rewarded in the end. बहुत बढ़िया पासिंग शॉट ध्रुव का, और उनको उसके साथ एडवांटेज भी मिल गया। और दोनों ही खिलाड़ी बहुत लंबी रैली रही और बहुत विविधता देखने को मिला इस पर्टिकुलर रैली में। और एक पासिंग शॉट, बहुत खूबसूरत पासिंग शॉट, इस मैच का पहला पासिंग शॉट, जिसके बदौलत ध्रुव को ये एडवांटेज अर्जित हुआ। शक्तिशाली रिटर्न और फिर से ड्यूस। I think this has been the longest game of the match so far. Both the players have been stretching each other out, making sure it's not easy for any of them in this match so far. दो चीजें अर्जुन के पक्ष में, एक गो टू सर्व है उनके पास जो ध्रुव के पास नहीं है। Well, that's the mark of a big top player, and experience certainly counts. You know which cards to play, you know the shots that you have, and you play to your strengths to win. A very well, beautifully crafted point there by Arjun, finishing it off at the net. एक ब्रेक पॉइंट सेव किया इस समय, क्योंकि एडवांटेज अर्जुन के पास था। वो खूबसूरत वॉली के बदौलत उन्होंने एडवांटेज लिया, पर ध्रुव ने एक बार फिर बराबरी को इस मैच को ले आए। ड्यूस इस मैच की सबसे लंबी गेम, कम से कम 3 बार ड्यूस हो चुका है। Well, Arjun is leaving no stone unturned here. He's constantly putting pressure, making sure he's very aggressive with those short approaches, coming up to the net at every opportunity, forcing his opponent to hit the ball out. और ये लॉन्ग हुआ, ये अटेम्प्टेड फोरहैंड डाउन द लाइन, और उसी के साथ पहला सेट अर्जुन के पक्ष में 6-2। 6-2 देख के तो लगता है कि बहुत आसान सी जीत हो गई अर्जुन को पहले सेट में, पर इस स्कोर बोर्ड ने ये नहीं दिखाया है कि ध्रुव ने काफ़ी कड़ा मुकाबला किया। और बहुत बार ऐसे भी मौके थे जब दोनों खिलाड़ियों के बीच में ज़्यादा अंतर नहीं था, पर अर्जुन के पास दो चीज़ें रही। एक तो वे नेट के पास अग्रसर हो जाते हैं, ध्रुव नेट प्ले नहीं है, ध्रुव के पास फिलहाल नहीं देखने को मिला। और अर्जुन के पास एक गो टू सर्व है, जब भी वे टाइट सिचुएशन में होते हैं तो सर्विस के जरिए एक आसान सा पॉइंट अर्जित कर लेते हैं। ध्रुव के पास अभी वो एक शक्तिशाली सर्व नहीं है, और जब अपने सर्व में प्रेशर में दबाव में आते हैं तो एक ऐसा सर्व जो उन्हें तुरंत दबाव से बाहर निकाले, वो उनके हाथ में नहीं है। और इन्हीं दो कारण है जिसके कारण पहला सेट अर्जुन के पक्ष में गया
पर मैं समझता हूँ ध्रुव को हताश नहीं होना चाहिए अंकिता। Yeah, he's clearly playing against a very experienced player. Arjun has been playing the professional circuit for quite a few years now. He's ranked around 500s in the ATP singles ranking, and quite high, 135, almost trying to break into the top 100 of the doubles ranking. It's very, very important, because if you are able to do so, you do get the opportunity to play Grand Slams next year. That's the dream that every Indian has, and it's a very big experience, and for anyone who gets to play those big events. He's had some impressive wins this year: 3 ATP doubles titles, won finals. He's also won 2 singles futures in March in Bhopal and Bangalore. So impressive wins this year, and not to forget that Maharashtra won the men's gold medal for the um, teams event 2 days back. अर्जुन की निगाहें बिल्कुल स्वर्ण पदक पे ही रहेगी। शुरुआत से ही दबाव डाल रहे हैं अर्जुन अपने प्रतिद्वंदी पर, और बहुत अच्छा मिश्रण कर रहे हैं अपने शॉट्स का, और 30-0 की बढ़त ले चुके हैं। कभी स्लाइस करते हैं, कभी बैकहैंड डबल फिस्टेड बैकहैंड, कभी फोरहैंड क्रॉस कोर्ट। बहुत अच्छा। You know, to be able to beat a top tennis player or to be one yourself, you must have a plan A, plan B. You should be equipped to play different game styles, else it becomes very difficult with a unidirection style, dimensional way of playing tennis, because the opponents will be quick to understand your strategy, and you won't be able to do something different to counter that. बहुत अच्छी रैली, और ध्रुव ने भी अपना आपा नहीं खोया, और एंड में एक बहुत अच्छे स्लाइस शॉट से ये पॉइंट अर्जित किया। काफ़ी स्ट्रेच कर रहे हैं अर्जुन को। अर्जुन अपना सारा अनुभव लेके आ रहे हैं। एक और शक्तिशाली सर्व पर फॉल्ट। Well, it's Arjun that comfortably holds serve and wins the first game of the second set, having won the first set 6-2. He has a strong serve. He's very comfortable at the net. He's been playing a lot of doubles and enjoying success as well. Dhruv has been constantly playing from the baseline and is not getting many opportunities to be the one dominating and dictating the points. The serve hasn't been able to put a dent, to Arjun, and Arjun has been very comfortable with his return so far, giving him the edge in this match. अर्जुन का गेम ऑलराउंड है। वे बेसलाइन से भी खेलते हैं और नेट की तरफ भी अग्रसर होते हैं। उनकी वॉलिंग भी अच्छी है। ध्रुव के थोड़ा सा यूनी डायमेंशनल गेम है। वे बेसलाइन से ही खड़े रहते हैं और वहीं से वे खेलते हैं। रैलीज अच्छी करते हैं, उनकी कोर्ट कवरेज अच्छी है, पर अर्जुन की विविधता के सामने उनको फिलहाल झुकना पड़ रहा है। पहला सेट 6-2 से हार गए और दूसरे सेट में भी 0-1 से पिछड़े हुए हैं।
उन्होंने अपनी जर्सी बदल ली है, अभी तक पीली जर्सी में थे और अब उन्होंने ब्लू जर्सी पहन ली है। शायद चेंज ऑफ फॉर्चून भी होगा चेंज ऑफ जर्सी के साथ, और कुछ तो अर्जुन के सामने टैक्टिक्स उनका चल नहीं रहा है। An easy put away overhead there for Arjun. Enjoying coming up to the net at every opportunity he gets. He's clearly the one dictating the points here since the start of the first set. इस बार नेट की तरफ अग्रसर हुए ध्रुव, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, पर इस बार उन्होंने इनिशिएटिव लिया, नेट की ओर अग्रसर हुए और एक खूबसूरत वॉली से ये पॉइंट अर्जित किया। यही करना पड़ेगा उन्हें इस तरह के प्रतिद्वंदी के सामने, जिनका गेम बहुत ऑलराउंड है। तो ध्रुव को भी बहुत से शॉट्स खेलने पड़ेंगे इस मैच में वापसी के लिए। When you're down, your strategy is clearly not working and you got to change things around. You got to think it through, analyze and do something different, and that's exactly what Dhruv managed to do in the previous point. He took the advantage to his favor, came up to the net and finished the point. He's not going to be enjoying a lot of success by letting Arjun come and dictate at the net, so he'll have to take the net away from him at various occasions, and he has to be very comfortable to be able to execute that. To be able to put up a better show here today. 30 all. और एक ब्रेक पॉइंट अर्जुन के पक्ष में। अनफोर्स्ड एरर जो इस समय वे नहीं कर सकते हैं, पर उन्होंने कर दिया, और एक ब्रेक पॉइंट अर्जुन के पक्ष में। It's an early break of serve there for Arjun, enjoying another comfortable lead in the second set. He's up to love. Time for him to serve. पहले सेट का ही कहानी दोहराया जा रहा है। पहले सेट में भी ऐसा ही हुआ था कि पहला ही सर्व जो ध्रुव का था वो अर्जुन ने ब्रेक कर लिया और 2-0 की बढ़त ले ली। वही 2-0 की बढ़त दूसरे सेट में भी, और उसी के कारण बहुत ही मजबूती की स्थिति में इस मैच में A very consistent, first serve percentage here by Arjun. He's maintained it throughout so far, and in my opinion, I think that's definitely helping him make things easy here in this match. बिल्कुल सही, एक और शक्तिशाली सर्व, और अपने सर्विस को वो बहुत ही आसानी से होल्ड कर रहे हैं। Well, he goes for another big one on the second serve, and it does give him an ace. That's a big, big serve. कोई मौका नहीं था ध्रुव का उस समय। Look at the replay. Straight out wide, Dhruv with no answers.
Arjun trying a repeat of the previous performance, unable to do so. When you're enjoying a comfortable lead, it gives you the confidence to take those risks, to try those big flashy shots, and sometimes it just pays off. Another great performance there by Arjun. A very strong, comfortable hold. He's up 6-2 in the first and a 3-love lead in the second. Arjun Khare from Maharashtra giving us a fine display of tennis. Good serves, some amazing net play, and very confidently cruising through this match at the moment. ऐसा प्रतीत हो रहा है अंकिता कि ये मैच तो अर्जुन बहुत ही कंफर्टेबली इस मैच में विजय हासिल कर लेंगे और इस समय थोड़ी सी शायद वो एक्सपेरिमेंट करने लग गए हैं और दोनों ही खिलाड़ी इस धूप से परेशान और अपने आप को कूल कर रहे हैं ड्रिंक्स लेकर। 35 डिग्री से शायद टेम्परेचर और हार्ड कोर्ट पे खेला जा रहा है और हार्ड कोर्ट थोड़ा रिफ्लेक्ट भी करता है हीट को, तो उसके कारण और भी गर्माहट हो जाती है। Just to give our viewers an update of some of the performances that have taken place so far. We had a very long match where second seed Rituja Bhosle defeated Sai Smita 6-1, 6-7, 6-love in the women's singles quarterfinals. We had the men's second seed Manish Suresh Kumar defeat Shivang Bhatnagar from Delhi 7-6, 6-3. The third seed in the men's singles quarterfinals, Prajwal Dev from Karnataka defeated Abhinav Sanjeev of Tamil Nadu 7-5, 6-2. इससे एक चीज़ तो ज़रूर है कि टॉप सीडेड खिलाड़ियों को इस बार चुनौती मिल रही है। बहुत ही सुंदर टेनिस दोनों ही खिलाड़ियों से, मतलब बहुत अच्छा कोर्ट कवरेज रहा ध्रुव का, पर अर्जुन के अनुभव और उनकी विविधता के सामने उन्हें झुकना पड़ा। बहुत अच्छी बॉलिंग अर्जुन की। 15-0 से आगे। Well, a good strategy there, trying to change the pace with a very effective slice. It stayed low and did help him give the point, as Arjun could not manage to get it back inside the court. Ball! Sorry, 15. वीक रिटर्न का फायदा उठाया और आसानी से डिस्पैच करके एक अंक अर्जित किया अपने लिए। एकदम नेट की तरफ बढ़े इस बार, जो हमने नहीं देखा उनको करते हुए बहुत। Just the kind of play that you would need from him if he wants to make a good match. He wants to give him a good fight here. So far, he stayed way behind the baseline, and his shots have not been able to really trouble his opponent. 40-15. Well, a good first serve can definitely help you shake things up. शुरू से ही दबाव में दिखे अर्जुन इस पर्टिकुलर पॉइंट में। अच्छा सर्व और उसके बाद कोर्ट के दोनों तरफ उनको दौड़ाया गया। Missed Sorry, opportunity there for Dhruv. Ball.
one good point, and this will be the first hold that he has in this match so far. He hasn't been able to hold his serves. The serves haven't proved to be quite effective here today. A very important point for him to shorten the lead here in this match. Wait, please. Game helper. Well, he finally manages to leads hold 3 games to serve 1, with second that set. amazing backhand shot cross court. This is the first hold that Dhruv enjoys in this match. It's 3-1 for Arjun Khare on serve. Love 15. एक और डबल फॉल्ट अर्जुन से पिछले गेम में भी हमने देखा एक डबल फॉल्ट हुआ थोड़ी सी लैप्स इन कंसंट्रेशन दिख रही है He's अर्जुन की तरफ probably से still thinking about the previous game that went by. Same court. Same court. एक और डबल फॉल्ट Love 30. Probably still upset the way he played in the previous game. Sometimes a lapse of concentration and a few loose points and the game is gone. थोड़े से रिदम लूज कर रहे हैं इस वक्त अपने आप पे काबू करना पड़ेगा नियंत्रण करना पड़ेगा अर्जुन को Well, he's 15, back 30. with that disruptive first serve and some amazing display at the net. Going for too much 15-40. seems to be slightly hurried here. Not the time to lose your control and patience. He's enjoying a very comfortable lead. अंकिता दो ब्रेक पॉइंट इस समय ध्रुव के पक्ष में 30-40. Well, Dhruv did try his best, but his best was not enough. Arjun manages to pull himself out of the tricky situation. Dhruv still an opportunity to break serves here to shorten the lead. Long. इस बार वो गो टू सर्व ने उनका साथ नहीं दिया और Game Hirapa. एक और डबल फॉल्ट और ध्रुव Really, ने 3 पहली games to बार 2, second इस set. सेट में अर्जुन को ब्रेक कर दिया और इस गेम में हमने देखा 3 डबल फॉल्ट हुए जिसके कारण ही उनका सर्विस ब्रेक हुआ अब ये मैच बहुत ही दिलचस्प हो गया है क्योंकि अगर ये सर्विस को होल्ड कर लेते हैं तो फिर 3-3 की बराबरी पर हो जाएगा ये सेट अभी तक एक ब्रेक पॉइंट मिला अर्जुन को और एक ब्रेक बैक हो गया ध्रुव से अब उन्हें अपना सर्विस होल्ड करना पड़ेगा तो मैच एक बार फिर बराबरी की ओर और बहुत ही दिलचस्प हो जाएगा Just when you think that the match is boys, one-sided live and TV is चल रहा है, clearly आप तो going mobile in कोड one पे use player's कर रहे हो। favor, नहीं जो भी है some आप शो नहीं कर सकते एक तो कोड पे ला ही नहीं changes, a सकते few आप, पहली easy बात। points, और थोड़ा and प्रोफेशनलिज्म दिखाओ लाइव टीवी है ना the opponent is back in business. और ध्रुव की फाइटिंग स्पिरिट की भी सराहना करनी पड़ेगी क्योंकि उस समय लग रहा था कि ये मैच लेके भाग जाएंगे अर्जुन पर ध्रुव ने उनको ऐसे करने नहीं दिया
और वहीं पे खड़े रहे, डटे रहे और मैच में अब वापसी कर चुके हैं। I think we'd like to give Dhruv a lot of credit. I mean, he's playing against a tougher opponent, you know, but he's been relentless in his approach, trying to make sure that he stays in the match. He's giving it his best. He hasn't let his, you know, hasn't lost his cool. He's, despite being in the uncomfortable situation, being down a set and 3-love, he still stayed calm, tried to go for his shots and make the most of the opportunity that he's got. सर्विस होल्ड करना पड़ेगा और पहले सर्विस का प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा। Let for service. Fifteen off. A big serve there by Dhruv. Arjun with no answers. Dhruv clearly looking more confident in his approach now, you know. He should be able to come up with some good first serves. Out. इस बार नेट कॉर्ट ने फिर अब साथ दिया ध्रुव का, जिसके बदौलत अब वे 30 लव की लीड पे हैं अपने सर्विस पर। Sorry, 15. Well, a quick hit there by Arjun, trying to get back into this game. That backhand down the line in the previous point, not the correct shot selection. You know, you're stretched out wide. You want to go in for a placement. You want to keep the ball 40, back 15. cross court, nice and deep. Going for it at that point of time doesn't really help you in the long run. एकाएक दो बहुत ही अच्छे सर्व इस गेम में ध्रुव से, और 40-15 की लीड अपने सर्विस पर। डबल फॉल्ट, और किस समय जाके उन्होंने डबल फॉल्ट कर दिया। Both the players under immense pressure at this point of time. Big return there by Arjun, really jamming Dhruv in the center of the court. The ball right at his feet. Dhruv not in a position to return. लगातार पॉइंट लेकर अब एडवांटेज अर्जुन की तरफ। ऐसे लग रहा था कि ध्रुव आसानी से अपने सर्विस को होल्ड करके गेम में, इस मैच में वापसी करेंगे, पर उनका प्रतिद्वंदी नंबर 1 खिलाड़ी है और ऐसे ही खिलाड़ी नंबर 1 नहीं बनता है। It's back to deuce just when we thought that Arjun would make full use of his advantage and take away the break point. A good strong first serve by Dhruv did put a dent to those plans. Well, another opportunity, a big serve here by Dhruv. Another advantage here, a chance to hold serves and level things out in the second set.
Out. It's the more experienced Yes. of the two that runs away with the point. Arjun clearly stretching Dhruv out on both sides. Look at that stretch. A big ground stroke there. Another break point for Advantage, Arjun. Khare. The Maharashtra lad seems to be hanging in there, not wanting to give away this game. He knows the importance that this game holds if he wants to get his lead back on the board. Caught. ये भी काफी लंबा गेम है। इस बार इनिशिएटिव लिया ध्रुव ने, अर्जुन को पहले से ही बैकफुट पे रख के और उसके बाद नेट की तरफ भी अग्रसर हुए और फलस्वरूप ड्यूस। मुकाबला कड़ा है और ध्रुव अच्छी चुनौती दे रहे हैं नंबर 1 सीड को। Advantage, correct. वो बहुत अच्छा ओवर हेड पासिंग शॉट और ध्रुव वहां पे चकमा खा गए और कोर्ट के बीचों बीच फंस गए और एडवांटेज एक बार फिर अर्जुन के हाथ में। आसान सा मौका और उन्होंने डिस्पैच कर दिया उसको आसानी से। Both the players really fighting it tooth and nail, trying to make sure that the game is in their favor. Dhruv clearly showing the best performance he can give today. He's fighting it out, not willing to let go. Advantage, Hirappa. Well, an overrule there by the chair umpire. The serve was good. What an ace at an important point. A chance to hold serves again. अच्छा रिटर्न था अर्जुन का एकदम ध्रुव के पैरों पर और उसके बाद ध्रुव दबाव में ही रहे और उनका आखिरी जो लॉब शॉट था वो लॉन्ग गया। और यही निशानी है अच्छे प्लेयर की, जब वे अपने प्रतिद्वंदी के पैर पर बॉल को डालते हैं उसके बाद एकदम दबाव में हो ही जाता है प्रतिद्वंदी। अभी भी ड्यूस। Big down the line return there by Dhruv. A very well played point, a good setup. The cross court very deep and sharp, giving him that opportunity to play the open court, and he did so very successfully. Another chance to hold serves for Dhruv Hirappa. Out. और आखिरकार बहुत ही बड़े संघर्ष के बाद ध्रुव को ये पॉइंट हासिल हुआ, ये गेम हासिल हुआ और उन्होंने अपने सर्विस को होल्ड कर लिया और इस सेट में और इस मैच में उन्होंने वापसी कर ली। अब स्कोर है 3-3 की बराबरी पर।
वे 3-1 से पिछड़े हुए थे और हमें ऐसे लग रहा था कि अर्जुन इस मैच को लेके भाग जाएंगे, पर ध्रुव की तारीफ करनी पड़ेगी और जितनी भी तारीफ करें उतनी भी कम है। वे डटे रहे और उन्होंने एक आक्रामक रवैया अपनाया और नेट की तरफ बढ़ने लगे, जो वो पहले नहीं कर रहे थे, और उनके सर्विस में भी एक सुधार आ गई, एकाएक सुधार आ गई, कई एस किए और उसी के कारण इस पोजीशन में वे अब आ चुके हैं। Arjun is clearly the more experienced and stronger in terms of style of play with regards to his serve, his game, and his net approach. But winning this game should definitely give Dhruv, some extra confidence and the chance to fight it out even longer. He should, even while playing on the baseline, he should really try and push Arjun back and hurt him with his moves if he wants to make the most of the match here today. अर्जुन बिल्कुल पोजीशन में नहीं थे वो इनसाइड इन शॉट खेलने के लिए और फलस्वरूप लॉन्ग गया 15 ऑल। और बहुत अच्छा बैकहैंड पुट अवे, एक क्लासिक पॉइंट रहा वो, शक्तिशाली सर्व और उसके बाद एक पावरफुल बैकहैंड वॉली, 30-15 की लीड। Another big serve there by Arjun. It's back to 30 all. Arjun can be quite destructive with his first serves. He knows how to place them well with a lot of pace. For a double fault there by Arjun, clearly not expected. He made 3 double faults in the previous game, and that's where the match. थोड़ा सा ऐसा लग रहा है अंकिता कि वो अपने सर्विस पे ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। गो टू सर्व तो है उनके पास, पर शायद उस पर ज़्यादा डिपेंडेंट होने लग गए हैं और उसी के कारण ये गलतियां हो रही है। Well, it was Arjun who was enjoying the 3-1 lead, 3 double faults, a break of serve, gave Dhruv the opportunity to level things at 3 all, another double fault at such a crucial time at 30 all, and Dhruv seizes the opportunity this time, taking a 4-3 lead in the second set. और एक और ब्रेक अर्जुन के सर्विस का, और ध्रुव ने जब से ये आक्रामक रवैया अपनाया है तब से नतीजे उनके पक्ष में आने लगे हैं और इस गेम का भी रुख उसी से पलटा है। अब अर्जुन के सर्विस को वो अटैक करते हैं और आगे भी बढ़ते हैं और स्ट्रोक्स में भी ज़्यादा मिश्रण दिख रहा है और दबाव में आ गए हैं अर्जुन। अर्जुन अपने सर्विस पर ज़्यादा डिपेंड कर रहे थे पहले सेट में, और दूसरे सेट के शुरू में भी उनकी गो टू सर्व होती थी। जैसे अंकिता ने कहा कि जब भी एक टाइट कॉर्नर हो तो गो टू सर्व से उन्हें पॉइंट मिल जाता था, पर अब वो गो टू सर्व उन्हें धोखा देने लग गया। I think it's a repeat, performance of what we saw this morning in the men's singles quarterfinals, where second seed Rituja Bhosle won the first set. She did let her guard down a few casual points, and she ended up giving her opponent a 5-1 lead in the second. She lost a little bit of confidence there, started making a lot more errors, and suddenly she was in a very tight and uncomfortable situation. We see Arjun doing exactly the same thing. He was enjoying a good lead by winning the first set up 3-1. A few casual
trying to go for too much. Three double faults in one game, totally not acceptable, especially from a big server like Arjun. अगले गेम में भी एक डबल फॉल्ट हुआ उसके बाद. Out. अच्छा स्लाइस किया ध्रुव Love ने, 15. पर कोशिश प्रयास ठीक था, पर वो आउट निकला और अपने ही सर्व में वो पिछड़ गए. Well, it's Dhruv Hirpara enjoying a 4-3 lead on serve in the second set. Good change of pace there, very interesting strategy. He will definitely have to keep Arjun back exactly the way he did so in this point to be able to dominate and dictate points better. The slice clearly helping him achieve this in the previous point. पोजीशन में नहीं थे उस फोरहैंड क्रॉस कोर्ट के लिए और थोड़ा सा कैजुअली खेले. उनका फुट मूवमेंट भी इस समय थोड़ा सा धीमा और आउट हुआ. फलस्वरूप 30-15 का लीड अपने सर्व में 4-3 से भी आगे इस सेट में. Desperate situation to be desperate. 40-15. Not the perfect shot selection there. He was way too behind the baseline to have tried that overhead. Landing right in the middle of the net. ध्रुव ने एक लॉब किया और एकदम बेसलाइन पे वो लॉब आया और अर्जुन बेसलाइन के पीछे थे और उसके बावजूद अपने शॉट को कंट्रोल नहीं कर पाए. Certainly found his strategy and is executing it very beautifully here with some high deep forehands that are keeping Arjun back behind the baseline and those short low slices clearly troubling Arjun and putting him off rhythm. लगता है कि इन्होंने जो रणनीति अपनाई है कि अर्जुन को अब वो पेस नहीं देंगे, तो जिसके कारण अर्जुन की थोड़ी टाइमिंग में गड़बड़ी आ चुकी है और 5-3 से अब इस सेट में वे पीछे चल रहे हैं. इसका मतलब 5 लगातार गेम वे हार चुके हैं. Wait, please. Arjun trying his best to be attacking with his serves. A very important hold required here to stay in this set. Cannot afford to be casual with his strokes. Arjun Khare. Oh!
खूबसूरत पासिंग शॉट और अर्जुन ने अपना पूरा तजुर्बा और अनुभव का इधर झलक दिखाया। और इस गेम में अब वे काफ़ी आगे हैं, 40-15 से है, तो सर्विस तो वो होल्ड कर ही लेंगे ऐसा लग रहा है। पर ध्रुव की जो सर्विस होगी अगली, वो बहुत ही दिलचस्प रहेगा। A big serve there by Arjun. What we have been seeing so far in the first set, it's back and it's helped him hold serves, get back to 5-4 in the second set. He was in a very comfortable position at one point of time after winning the first set, up 3-1 in the second before he gave away 4 games in a row. And it's time for Dhruv to serve out the set at 5-4. अभी तक ध्रुव थोड़े स्ट्रगल कर रहे हैं अपने सर्विस को होल्ड करने के लिए, और उनके ऊपर दबाव रहेगा इस सर्विस को होल्ड करने के लिए। पर उसमें अगर वे कामयाब रहेंगे तो 1-1 की बराबरी में लेके आ जाएंगे इस मैच में। तो सुनहरा अवसर ध्रुव के पास इस मैच को बराबरी में लाने के लिए। A very commendable performance from the Gujarat player so far. He's managed to really push Arjun a few errors on important points, and it has put Arjun here on the back foot. होम क्राउड बिल्कुल ध्रुव के पीछे। A very close line call there. The linesman calling Arjun's return out. Every point is going to be very crucial hereafter. Both the players under a lot of stress, a lot of pressure to win this game. एक और अच्छी सर्विस और 30 लव का लीड हो गया है, और सिर्फ 2 पॉइंट दूर इस मैच को बराबरी में लाने के लिए। Arjun clearly getting tangled up in this situation. 2 return errors here, trying to go for too much. खूबसूरत खेल ध्रुव का वहां पर, बहुत अच्छा कोर्ट कवरेज, और एक समय ऐसे लगा था कि अर्जुन ने पॉइंट सेटअप कर लिया था अपने पक्ष में, पर ध्रुव का बहुत अच्छा फाइट बैक और 40 लव की लीड इस समय, 3 सेट पॉइंट उनके पास। Well, the set number 2 goes to the man from Gujarat, Dhruv Hirpara. It's 1-all in this men's singles quarterfinals encounter between number 1 seed Arjun Khare from Maharashtra and Dhruv Hirpara from Gujarat. A lot of credit is due to Dhruv. He was down and out, but he never gave up, kept fighting his way through. There were a lot of times when we did think he wouldn't manage to pull through, but if you want for the 10 minutes break. Some change of strategy, some easy points given away by Arjun, and it's 1-all. मुझे लगता है कि ये एक मिश्रण हुआ है, क्योंकि जैसे ही रणनीति बदली ध्रुव ने और नेट की तरफ पढ़ने लगे और ज़्यादा स्लाइस शॉट्स खेलने लगे, जिसके कारण वो पेस कम हुआ और अर्जुन को ज़्यादा प्रेशर में डालने लगे। उसके बाद से अर्जुन की तरफ से बहुत अनफोर्स्ड एरर्स होने लगे, यहाँ तक कि एक ही गेम में 2 डबल फॉल्ट और उसके अगले गेम में भी 1 डबल फॉल्ट।
और ध्रुव ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से इस मैच में वापसी कर दी है। पहला सेट 6-2 से हारने के बाद दूसरा सेट अब 6-4 से जीत चुके हैं और निर्णायक तीसरे सेट की ओर हम बढ़ रहे हैं। और इस समय स्थिति ये है कि अर्जुन ज़्यादा अनुभवी है और ऐसे स्थिति उन्होंने बहुत देखे होंगे, पर मोमेंटम जो है वो इस समय ध्रुव के पास है। Very important point, here is it will be interesting to watch who can really carry the momentum. It's one set all, and both of them can start fresh. Dhruv, obviously, a very commendable comeback here. We didn't expect him to, be down and out, and to be able to change strategies just when it was required, just when we thought that the match is going to go Arjun's way. He makes a great comeback there, winning 4 games in a row, and finally holding serves to take the set 6-4. It's Arjun starting off on set number 3. There's been a short break here due to the heat rule. As per the International Tennis Federation, if the temperature goes up to a certain degree, the players can enjoy a small short break and can step out of the court when it's one set all. जैसे ही अपने जर्सी को बदला ध्रुव ने, उसी समय उन्होंने अपनी रणनीति भी बदल ली और फिर मैच का रुख भी बदल गया उसके बाद से। और होम क्राउड जो है वो बिल्कुल ध्रुव के पीछे है, ध्रुव के साथ है, और उसने भी काफ़ी कुछ मोटिवेट किया हो गया ध्रुव को, जो पिछले मुकाबले में भी यश चौरिया के साथ भी ध्रुव ने पहला सेट ध्रुव गवा चुके थे और उसके बाद उन्होंने वापसी की दूसरे और तीसरे सेट को जीतकर। और आज जो उनके सामने जो प्रतिद्वंदी है वो वरीयता क्रम में नंबर 1 खिलाड़ी है, तो उनकी कौशल, उनकी प्रतिभा, उनकी कामयाबी और उनका अनुभव कहीं अधिक है ध्रुव से। पर ध्रुव ने कभी हार नहीं माना। पहले सेट हारने के बाद और दूसरे सेट में पिछड़े हुए थे और उस समय हमें ऐसे लग रहा था कि शायद ये भी देख लो एक बार, ध्रुव ये मैच आसानी से हार जाएंगे और हम अगले मैच की तरह बात करने लगे, पर ध्रुव ने सबको चौंका दिया अपने फाइटिंग स्पिरिट से। Well, it's one set all in this quarterfinals here today. On Monday afternoon, Arjun Khade, the top seed here, won the first set 6-2. And Dhruv Hirpara from Gujarat won the second after a great comeback. He held serves, broke Arjun, put him in a very tough situation, and won the second set 6-4. It will be Arjun who will be opening serves in the third set here, and it will be interesting to watch who can turn the tides in their favor in the very beginning of this third set. Taking a lead in this third set might definitely prove to be fruitful for either of the two players who are able to do so. बिल्कुल, ऐसे सिचुएशंस में बहुत बार रहे होंगे अर्जुन, तो उन्हें पता है कि ऐसे मौके पे क्या करना है। और वे इस समय टॉप सीड और फेवरेट भी हैं, पर यही चीज़ उनके ऊपर दबाव भी बन सकता है। इस समय जहाँ तक ध्रुव का सवाल है, कोई उन्हें जीतने की सोचता नहीं है कि वो इस मैच को जीतने वाले हैं। वो इस मैच को इतनी दूर लेके आए हैं, वो अपने आप में काबिल तारीफ़ है कि नंबर 1 सीड को तीसरे सेट तक ले जाना, और वो भी 1-3 से पिछड़ने के बाद, तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। तो हो सकता है दबाव होगा अर्जुन पे, क्योंकि उन्हें ये मैच जीतना ही है। उनकी निगाहें स्वर्ण पदक पर है, जबकि ध्रुव के लिए इतना दूर आना भी अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सक्सेस है। पर उन्हें इससे संतोष नहीं होना चाहिए और इस मैच में अर्जुन को कड़ी से कड़ी चुनौती देके अगर हरा भी देंगे तो उनके लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, यादगार उपलब्धि होगी
ध्रुव के लिए, और इस सुनहरे मौकों को उन्हें नहीं गंवाना चाहिए। Well, it's been an interesting match here so far, looking at the highlights of the previous set that went by. Dhruv Hirpara pushing Arjun really far and making him hit those uncomfortable shots in tough situations. But both the players really fighting it out there in the middle of the second set. फिटनेस, एंड्योरेंस की भी परीक्षा होगी यहाँ पर। टेनिस कौशल का तो होगा ही, फाइटिंग स्पिरिट का तो होगा ही, एकाग्रता का होगा ही, पर साथ ही साथ फिटनेस और स्टेमिना का भी। और इस समय ब्रेक है, हीट ब्रेक। दोनों ही खिलाड़ी विश्राम कर रहे हैं। 6-2, 4-6 ये है अभी का स्कोर। अर्जुन कड़े महाराष्ट्र के वरीयता क्रम में नंबर 1 और ध्रुव हिरपारा वरीयता क्रम में नंबर 23। इन दो के बीच में ये मुकाबला हो रहा है और ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला है। Giving you an update on the previous men's matches that अंकिता, आप ऐसे सिचुएशन में कई बार रह चुकी होंगी जब आपसे लोअर रैंक्ड ओपोनेंट आपको ऐसा कड़ी चुनौती देता है तो और थर्ड सेट तक ले जाता है, तो उस समय आपकी मानसिक स्थिति क्या होती है? it's very important to remain calm, composed, to analyze what you have been doing so far. I have definitely been in tough situations many times because being a top seed, being a seeded player in a tournament, like we had mentioned in the beginning of the match, it gives the other opponent a lot of confidence to try out shots and to be able to openly play their game. They're not under pressure to perform, and that sometimes helps them really raise the level of their tennis. So it's important to stick to your strengths, to come out there, be much more confident, consistent in your approach, stick to a strategy that has been working so far, because that is the one that definitely gives you better results in the end. ये जो नथिंग टू लूज वाली बात आप कह रहे थे, शायद ध्रुव हिरपारा उस मानसिक स्थिति में आ गए थे जब वे पहले सेट हार गए और दूसरे सेट में पिछड़ने लगे और उसके बाद उन्होंने अपना जी जान लगा दिया। पर अब स्थिति ऐसी है कि उनके पास भी काफ़ी कुछ है। नथिंग टू लूज़ वाली स्थिति में अब वो नहीं है क्योंकि 1-1 हो चुका है और ये मैच जीतने के स्थिति में वे भी आ चुके हैं। तो क्या वे अपने आप के ऊपर दबाव डालेंगे ऐसी स्थिति में? क्या वे बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे ऐसी स्थिति में? ये भी देखने को मिला होगा आपको, अंकिता। It's one set all. You got to start fresh. The players have taken a short break. They'll try to regroup, regain their strength. Obviously, get hydrated because it's a long road ahead. They'll really have to fight it out. The initial games are very important, and getting a good lead by either of the players is definitely going to give them the much needed advantage. It will be interesting to watch who's able to execute their strategy better. We saw Dhruv very cleverly trying to
add more spin on his forehands, keeping Arjun back, playing the short, low slices that really troubled Arjun with his rhythm in the later parts of the second set. So we'll have to wait and watch and see if he's able to continuously and continue to do so in the third, or will Arjun with his destructive first serves and amazing net play, will he be able to work his way through this match? पहला सेट में अर्जुन की सर्विस बहुत ही शक्तिशाली रही और बहुत खतरनाक साबित हुई, घातक साबित हुई। पर दूसरे सेट में कई बार डबल फॉल्ट हो गए और उसी के कारण 2 बार सर्विस ब्रेक का सामना करना पड़ा उन्हें। Well, it will be Arjun Khade who will be serving the first game of the third set. निर्णायक तीसरा सेट अब आरंभ होने वाला है। अर्जुन खड़े सर्विस करेंगे। एक लंबी रैली पर बहुत ही डीप ग्राउंड स्ट्रोक्स खेला अर्जुन ने और उसी के बदौलत उन्हें ये पॉइंट अर्जित हुआ। That's the serve that we've used to seeing, and he's back with them again. Out. Arjun Khade, big serves there, creating havoc. और ये लॉन्ग गैप एक बार फिर पोजीशन में नहीं थे और शॉट सिलेक्शन पर भी प्रश्न उठा सकते हैं इस समय अर्जुन खड़े की, पर फिर भी कंफर्टेबल पोजीशन। Left for service. A comfortable hold there by Arjun, some big serving. Not in too much pressure there. A strong start to the first game of the third set. As I mentioned earlier, an early break for either of the players will definitely give them an advantage. You know, pull them out of the pressure situation that they are in. It will be interesting to see who's able to trouble each other with their strategy. The big question is whether Dhruv will be able to retain his level of performance like he did in the later parts of the second set. ध्रुव तैयार अपने सर्विस के लिए और बहुत कुछ निर्भर रहेगा उनके सर्विस पर। रॉन्ग फुटेड हुए उधर और अर्जुन बहुत ही शक्तिशाली रिटर्न कर रहे हैं। Left for service. I see that it's touching the line. It's nerves that do get to you sometimes, and that's when
You double fault on important occasions. We saw Arjun do the same in the previous set. ध्रुव गलतियां नहीं करते हैं ज़्यादा, पर वो कर बैठे इस गेम में और फलस्वरूप लव 30 से पिछड़े हुए अपने ही सर्विस पर। Arjun were really trying to change the pace of the stroke, but wasn't successfully able to do so. A good attempt there, but a little unsuccessful in the end. बहुत पावरफुल रिटर्न अर्जुन का, और ध्रुव के पास कोई उत्तर नहीं था उस पे। एकदम उनके पैर पे आया और अपने बॉडी को वो कंट्रोल नहीं कर पाए। 15-40 से पिछड़े हुए अपने ही सर्विस में। 2 ब्रेक पॉइंट अर्जुन के पक्ष पे। Dhruv did have his chances here in this game. This hold would have been really important for him to stay at par, but Arjun clearly the better of the two, showing his experience in keeping calm, composed and hitting those balls in the court. बहुत ही क्लासिक पॉइंट, शक्तिशाली सर्व और नेट की तरफ एग्रेसर हुए और ध्रुव के पास कोई मौका नहीं। इस सेट में अर्जुन बहुत ही जोश से खेल रहे हैं, एक रणनीति बदल के आए हैं और बहुत ही आक्रामक तेवर उनके। Very impressive stroke play here by Arjun. He's very quick and light on his feet. You can see a huge change in his movement. He's taking the balls early. Very quick with his moves. Running up to a quick 40-love lead on his serve. He's not giving Dhruv a lot of time to think between the points. You know, he's being very quick and he's really cutting down on the time. If you've noticed, he's quickened his pace and he's playing it really fast. Another impressive serve followed by a backhand down the line, and it gives Arjun a 3-love lead in the final set. बहुत ही अच्छे पोजीशन में थे उस समय अर्जुन, वो बैकहैंड डाउन द लाइन मारने के लिए। पावरफुल सर्व और उसी के कारण बहुत अच्छे पोजीशन में आके उन्होंने शॉट्स खेले हैं। और ध्रुव को इस समय कोई भी मौका नहीं मिला ये तीनों गेम में, और अगर अर्जुन इसी लय में खेलेंगे अगले 15 मिनट में तो मेरे ख्याल से ये सेट ले जाएंगे। बहुत ही शीघ्र 3-0 की बढ़त ले चुके हैं इस सेट में। We've talked about the importance of taking a quick lead, and Arjun clearly, you know, he's doing the same. He's really quickened his pace. He's not giving Dhruv much time in, you know, between points. He's really upped his level of play, and that's showing with the score line here right at the moment. It's time for Dhruv, you know, to notice this, to slow things down a bit, to get the momentum back in his favor. He cannot be very hasty in his decision. He'll have to be more patient, keep more balls in, and try and execute his strategy if he wants to be able to get back into this match. उसकी कोशिश तो वो कर रहे थे, उन्होंने 1-2 स्लाइड शॉट्स खेले हैं पर वो उसका फल नहीं मिला और लॉन्ग गए हैं। तो उन्होंने कोशिश तो थोड़ी बहुत की है, और पिछले सेट में भी आपको याद होगा कि 3-0 की बढ़त थी अर्जुन के पास और उसके बाद ध्रुव ने वापसी की। उसे फिर दोहराना पड़ेगा इस सेट में इस समय ध्रुव को।
लड़ने की क्षमता है ध्रुव में। एक अच्छे सर्विस के साथ शुरुआत किया इस गेम को। Quarterfinal. It's that time of the day when the sun is really strong, and sometimes it affects you while serving. You got to be very careful with the toss. Fault. बट लोकल लैड को कंडीशंस के बारे में पता होना चाहिए। डबल फॉल्ट थ्रू से Sorry, 15. ध्रुव अभी भी पूरी कोशिश कर रहे हैं 30-15 से आगे। उनके सर्विस में एक पैनापन जरूर आ गया है, पर थोड़े डबल फॉल्ट हो रहे हैं जो नॉर्मली वो नहीं करते हैं। परिवर्तन के तौर पे ज्यादा स्पिन उस सर्विस पर और चकमा खा गए वहां पर अर्जुन। 40-15 की लीड। Amazing display of tennis there by Sorry, Arjun, sorry. keeping the balls very deep, very close to the baseline, not giving Dhruv any chances to turn the tables around here. He was constantly on the defense, and it didn't help his cause. Fault. क्या मेरा पा? और ध्रुव जिसके बारे फाइटिंग स्पिरिट के बारे में हमने पहले भी जिक्र किया, उन्होंने एक बार फिर उसका झलक दिखाया यहाँ पे, और मेहनत करके उन्होंने अपने सर्विस को जरूर होल्ड किया, और इस गेम में उन्होंने अच्छे सर्विस दिखाए और कुछ अच्छी रैलियां भी हुई। 3-1 से पीछे हैं। पिछले सेट में भी यही हुआ था, उन्होंने पहले अपना सर्विस होल्ड किया, उसके बाद अर्जुन के सर्विस को ब्रेक किया। ये बहुत ही निर्णायक गेम है इस मैच का, क्योंकि अगर अर्जुन इस सर्विस को होल्ड कर लेते हैं तो फिर 4-1 से पड़ जाएंगे। शक्तिशाली सर्व अर्जुन का हमेशा की तरह, और निर्णायक गेम में आसानी से 15 लव की लीड पर। पिछले सेट की गलतियां अब वो नहीं दोहराएंगे। Sorry, love. A big serve there by Arjun, trying to cement his lead as quickly as possible. Well, a quick 40 love lead here in the 5th game of the final set. मत बोल दे, फर्स्ट और सेकंड सेट के बीच में नहीं।
Net play Game there by correct. Arjun, the top seed lad from Maharashtra, Hurry, leads raises 4 to a games to 1 4-1 final lead in the set. final set after a well-fought. Ball boy. जिस बॉल रफ्तार से अर्जुन पास कर खेल दो। रहे हैं, ध्रुव को समझ नहीं आ रहा है कि उस रफ्तार को कैसे कम करें। वे स्लाइस शॉट जरूर खेल रहे हैं ताकि अर्जुन को वो पेस ना मिले, पर अभी इस सेट में उनको उस रणनीति से कोई कामयाबी नहीं मिल रही है। अर्जुन बहुत ही शीघ्र 4-1 से आगे जा चुके हैं और अब 2 ही पॉइंट है। 2 सर्विस अगर वो होल्ड करेंगे तो ये मैच उनका हो जाएगा। ध्रुव को कुछ बहुत ही बड़ा करिश्मा करना पड़ेगा इस मैच में वापसी के लिए। एक बड़े प्लेयर की निशानी है कि वे गलतियों को दोहराते नहीं हैं। तो पिछले सेट में जो गलतियां अर्जुन ने की, अब इस सेट में उसको नहीं दोहराने वाले हैं। More than errors, I think it was like a lack of focus. He got slightly casual trying for some very big serves, after being up 3-1, and I think it costed him dearly. He understands the importance of getting that one extra ball in play, trying to be slightly more patient, and he did have his chances.